I've already said, and increase certain thresholds for the requirement of tax to be deducted at source or collected at source. So both the threshold is being raised and the tedious collection itself is being brought down. So other than that, there are several members. I was hearing when member Seth spoke about how people who have second house, or the first house which they are occupying, and buying a second house and which they keep under their occupation, are also now being proposed to be removed from taxation, or even from the way in the taxpayer had to declare saying it is under my occupation and therefore no tax should be put. So those kind of compliance burdens have also been removed. In order that we help providing certainty for international taxation, the scope of the safe harbor rules is also now expanded. So this will reduce litigation. And in order to continue the support that we've been giving for the startups, we've allowed the incorporation before 1/4/2030 also to benefit from all those benefits which have been announced all the while. So that incorporation date deadline, which was coming to an end by 31st of this month, has now been extended till 30th, till 1st April 2030. So it is important, again, to talk about what the finance bill has done as regards customs duty. I briefly did mention that by bringing down the customs duties or by exempting or removing it completely, we are actually benefiting those small and medium industries who import intermediary goods or raw materials for their products, mainly, many of them, in fact, which mainly they use for producing some goods which they in turn export. So anyway, we wouldn't have allowed them to have the tax tax be exported. But even for those who are not exporting within the country, by bringing down the custom duties, we've actually helped in the manufacturing sector in this country. So we have used this opportunity to rationalize tariff structure and to address the duty inversion. Through this, I feel there will be more domestic value addition in industries. It will promote exports as well and absolutely facilitate trade and provide relief to the common people. So the customs, if I can take a minute over it again, customs rate structure announced in July budget has been further followed up in this budget as well. The 25-26 budget, about which we had discussed earlier, now I'm talking about the finance bill, proposes to remove 7 customs tariff rates for industrial goods. So 2 tranches of rationalization of customs tariff has happened. So far we have carried out, and they have reduced the number of tariff rates from 21 to 8, completely bringing it down, including the 0-rated ones. Many Indian exports will become now more competitive as the cost of imported inputs will completely be reduced. Only one other step which is very important, sir. We have now very clearly stated that only one, either the cess or the surcharge, will be applied per item. So social welfare surcharge to be exempted on 82 tariff lines, which are already subject to a cess. So the burden of a cess over which we bring in the burden of the surcharge will no longer happen. So the budget proposes to add 35 additional capital goods for the production of EV battery manufacturing, EV battery, and also 28 additional capital goods, which are important for production of mobile phone battery, are now being added to the exempted goods list. So they are not going to anymore be taxed. Therefore, we will be enabling the production of EV battery in this country and also more mobile phones and mobile phone batteries in this country. So those capital goods being exempted will actually benefit these 2 sectors. I've also read during the budget that fully we exempt basic custom duty on cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. All these
are in addition to the 25 critical minerals, which were fully exempted from BCD in the July 2024 budget. So if you would see that consistently, budget after budget, we are coming up with reduction in duties so that India's aspiration for being a manufacturing hub and also India's aspiration in building capacities for battery manufacturing, advanced chemistry is being supported. So this is a consistent thing. I heard quite a few members saying, oh, the tariff war has started. So in response to the tariff announcements made by President Trump, here are we doing it? No, we have been doing it from 2023. Steadily, every year, newer items are being brought in, keeping in mind Atmanirbhar Bharat, at the same time Vikasit Bharat's requirements, as much as simplifying the customs duty and the compliance details. So this is an ongoing process. It is nothing to do with today's global situation, but a process which will continue even in the future. So, sir, one other relief which is important for me to put on the table here is we are extending the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. Just to explain this, there are a lot of exporters who import items and on the very clear understanding that these imports are for value addition or manufacturing of a product which will get exported. So we allow it without duty. And when they come, they are expected to be used, produced, and exported out within a matter of 6 months. Many exporters had difficulty. They wanted an extension of time, and therefore we have given them 6 months to 1 year. What was 6 months, we have extended now by another 6 months and said, if you imported an item without duty and you want to export it, you have full 1 year's time, comply with it for that within that 1 year. And also for such importers, we'll now have to file only quarterly statements and not monthly statements. Now it is monthly statements. We are saying, all right, you do it only quarterly so that the compliance burden is completely off their shoulder. So there is one particular amendment which we brought in as government amendment, but it's now cleared from the Rajya Sabha. So it's part of the finance bill which has come here. I would like to highlight that. For the first time, our government had implemented the full parity between the pensioners of pre and post Seventh Pay Commission, Central Pay Commission. All pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired after 1/1/2016. The demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by this government. I'd like to thank Prime Minister Modi for having brought in that treatment, equal treatment for all pensioners, and this is something which we have taken on board in this finance bill. The Prime Minister had approved the establishment of the 8th Central Pay Commission also, which is now, I'm sure all members do have the information on it, to revise salaries and benefits of central government employees in January 2025. So just to highlight as to why this amendment here. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even the representations by employees before making their recommendations in March 2008, which thereafter, upon careful consideration, was accepted by the government. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th CPC, was similar to the previous CPCs. So, through this amendment, which we brought in the Lok Sabha and after Lok Sabha's passing, which is now before us, that the government is restoring the recommendations of the 6th Central Pay Commission and respecting it as an expert body. In this, I just want to add keeping in view the recommendations which the 6th Central Pay Commission had said,
a distinction among pensioners is inevitable, and that is what is being brought in. And as an amendment, and by way of validation, I want to highlight that the validation is what is being put in, and principles of expenditure on pension and liabilities. The validation rules do not in any way change or alter the existing pensions so fixed of existing civil pensioners from the present stage. So there is no change. The validation rules also do not affect defense pensioners in any way, as they are covered by separate rules. It is not an amendment. I would like to underline this point. It is not an amendment to any pension rules or instructions, but only a reaffirmation of the same with effect from 1st June 1972. That is the date the CCS pension rules were promulgated. The 6th Central Pay Commission made a distinction between the retirees pre-11-2006 and those of post-11-2006 periods. The then government, 2008, had accepted the recommendations of the 6th Central Pay Commission and decided that there will be a distinction between pensioners with reference to the cutoff date of 1-1-2006. The 7th Pay Commission has brought in parity between pre-1-1-2016 and post-1-1-2016 pensioners. I again reiterate that this is only a validation of existing rules. This does not alter or change existing civil or defense pensions. So these are largely the points about the finance bill or that is before us for consideration, sir. Now I'll like to respond to individual members and their comments. So I'll obviously start with the first speaker, former finance minister. It's a bit difficult when it comes to a finance. Honorable Finance Minister, two of the honorable members who had the occasion to intervene in the debate have sought my leave of absence from here. Dr. John Bitas and Sri Raghav Chadda. They have sought my leave. Okay. They had something urgent to deal with. Please go ahead. Sir, the former finance minister's observation was that the NDA government started with 4.3% of fiscal deficit. It certainly improved to 3.4%, but it rose to 4.8% in 2024-25, that is now. And that the previous governments also had faced various types of crisis, Asian finance crisis, GFS, the global financial crisis, taper tantrum, and so on. So he gently pointed out, saying, it's not right to blame the COVID pandemic. Sir, I'd like to just put it on record here that in 2014, when Prime Minister Modi's government was formed, India was the 10th largest economy. Today, within 10 years, under the leadership of Prime Minister Modi, we've reached the state of 5th largest economy. And within a few years, we will be the 3rd largest. And if the previous UPA governments also faced crisis, which he listed out, Asian financial crisis, GFS, taper tantrum, and so on, I'm constrained to mention here, the economy was a fragile 5 economy. You faced crisis, but where did you leave it? We faced COVID. Where are we keeping it today? That's the difference, sir. And therefore, I don't for a moment believe that the former finance minister wouldn't know these facts. But
I take the liberty to put it before you, saying, oh no, you faced the crisis and the outcome was Fragile 5. India's GDP was 10th largest in the world. We faced a crisis, but India is one of the fastest growing economy today. Sir, and also, we also faced crisis, and therefore, you facing COVID, I'd like to draw the attention of this honorable August House, sir. Congress-led UPA itself admitted that India was not unduly affected by the 2008 global financial crisis. In 2011, sir, the then finance minister, Shri Pranab Mukherjee, had said, and I quote, India, unlike most other economies, was not seriously affected by the financial turmoil of 2008 in the developed world. So the crisis was not big, even by the then standard. And COVID is a different one, in that it was not just a financial crisis, it was a crisis for lives. People had to live to come out of it. And livelihood was also severely affected. It is in that situation to provide domestically made vaccine to all the people, at least 1 dose, and some 2 doses, and some even the 3rd dose, and then make sure that moratorium is given, no industry should suffer, no one should be pulled up to the court saying you're an NPA. So a comprehensive plan was laid by Honorable Prime Minister to save lives, livelihoods, and recover the economy. So I want to highlight, sir, also a few points from the white paper which was released in 2024. In the 6 years between 2009 to 2014, the ratio of India's gross fiscal deficit to gross domestic product was at least 4.5%. It was between 4.5 and 5 in 3 years, between 5% and 6% in 1 year, and more than 6% in 2 years. What was hidden was even higher. The special bonds, that is the oil bonds, in lieu of cash subsidy issued to the oil marketing companies, fertilizer companies, and Food Corporation of India, total nearly 2 lakh crore in the 5 years from 2006 to 2010. Accounting for such hidden debt would have swelled the fiscal deficit from 6.1 to 7.9% in 2008-9 alone. So, one, the numbers were not really stating the full story. And two, you really didn't face a big crisis, which is the words which I can see from Shri Pranab Mukherjee's own statement. So the crisis was nowhere in comparison, now that I'm looking with the benefit of hindsight. And the numbers were anyway not telling the whole story. So I would like to submit in all modesty that comparison was not right. And second, sir, unfortunately, former finance minister also said, no one remembers the budget. Every one of the taxpayer, as I said a minute ago, has benefited. The small, the low income, and the middle income ones have benefited substantially. And we want to do that. We want to respect the taxpayers. Actually, when there is a level of expectation being met, I'm not saying every expectation is met, but at least when the middle income groups wanted some recognition and some relief, and when we have given something, people are only, I've also been traveling to different places where I've been talking about the budget. I've heard people say, thank you very much.
It's a great relief. We can now decide where we want to use that money, consumption or investment or savings, or spend on our children's education. So actually, there are people remembering the budget for that and coming to me to say that, which they didn't have to. Yes, sir. So people remember the budget or don't remember the budget. I'm seeing it as probably this budget has not given enough things with which the Congress is able to thrash the government or hit the government saying, oh, you've not done this, oh, you've not done this. In general, they are unable to pick anything as criticism, and therefore this generic, no one remembers the budget. I would like to think that that was a statement in a left-handed sort of way, compliment for the budget. So then, I thought the worst thing was to hear this from the finance minister, former finance minister. I can't believe he said this, but I want to admit, and therefore I want to explain why that wasn't right for him to have said it. There's no fiscal strategy in the fiscal policy statement. There is no guarantee that the fiscal deficit will decline. Sir, just off the cuff, since after 2020, we gave ourselves a glide path for the fiscal deficit reduction. And every year, if anything, anyone could have looked at the fiscal deficit number the moment the budget was read out. Not 1 year did we slip. Every year we've kept with the glide path given, and we are going towards meeting the fiscal deficit, which we have given in the glide path, which everybody has looked at. So the government has actually brought out a clear fiscal strategy for the year 25-26. And that is as required by the FRBM Act 2003. I would like to mention that a full section has been dedicated in the medium-term fiscal policy strategy statement, explaining the government's fiscal policy strategy in 25-26 budget document set that you get. It is there. I quote from para 37, the medium-term fiscal policy strategy statement. I quote, sir, the fiscal policy stance for 25-26, inter alia, includes cross-sectoral reforms to augment the economy's growth potential and its employment intensity, boosting domestic demand, continued focus on effective capital expenditure, creating new capacities and cutting-edge new technologies, investments in the development of human capital, saturation approach to social welfare, and strengthening the social safety net. Its objectives are to invigorate and sustain inclusive and equitable economic growth, enhance resilience, to mitigate risks, protect the vulnerable sections of the society, and bolster the country's overall macroeconomic fundamentals, unquote. So this is there in the document which was presented during this budget. I would like to further mention that the very para itself very much aligns with the government's own policy announcements, which was made in the budget speech. I quote again from para 3 of the same statement. The nimble fiscal policy strategy adopted by the Union government in the past COVID-19 pandemic years has generated desired fiscal policy results while providing for the country's development needs. In line with the commitment made in budget for 2021-22, the country is well on track to attain a fiscal deficit to GDP ratio below 4.5% in 2025-26. Continuing on this path, the Union government in the budget speech of 24-25, the regular budget,
has outlined a medium-term fiscal policy stance. It seeks to keep the central government fiscal deficit to GDP ratio such that the debt to GDP ratio is on a declining path. And this is in Annex 1, so anybody can see it. So it's amazing that in spite of this explicit mention in documented sets which go out, these are clearly given. I would request and appeal to the former finance minister to go back, look at these, read these. And they are in alignment with what we've said in the budget speech. They are not one way, we are not another way. Everything aligns. Sir, with a bit of hesitation, and I hope you will give me that little margin because I'm defending my position here. I find if the former finance minister says something here in this house, actually on those items, on those issues, Government of India under the leadership of Prime Minister Modi achieves that much and more. I'll give you one example. Sir, on 9th February 2017, former finance minister spoke and he said he doubted the digital transactions, the digital public infrastructure that we created. And he said, and I quote, "You have now made certain transactions mandatorily non-cash." I support it, but that is the way to go. And not to tell people, go to your village fair, buy potatoes and tomatoes, and pay 7 rupees 50 paise by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine? Does she have a POS machine there? Is it connected to an electricity source? Is there a Wi-Fi there? Is the internet working there? What kind of false picture you are presenting? Unquote. Sir, action proves what we have done in terms of digital public infrastructure under the leadership of Prime Minister Modi. So the concern expressed by the former finance minister has been squarely addressed. Similarly, in the fiscal deficit related concern that is expressed, I'm sure he will now appreciate that we have laid the path both for the immediate term and the medium term, and we shall achieve it like we've done it till now, all the 4-5 years. This year ends the number, coming year will end the number, below 4.5% fiscal deficit, not 1 year slippage. I'm sure this should give him adequate confidence to believe and trust in Prime Minister Modi's leadership. So about the levies, withdrawing of the levies, is it a reaction to President Trump's tariff war and so on? I have briefly explained it, that we have been doing this since 2023. Very clear example. There were 2 types of equalization levies. 6% levy imposed in the financial year 2016, and 2% levy imposed in 2020, which were applicable before July 2024 itself. The 2% levy was removed after stakeholder consultation, sir, in July budget to ease the compliance burden. And that was much before President Trump, even before he took his office. And similarly, several other steps have been taken. So the 6% levy which is being removed is a part of that process. And that's what is going on. And as I said, we will continue to rationalize on customs. So the last 3, without taking much of a time. Sir, Member Sagarika Ghosh
spoke about 10 years later, where is Sachedin? I want to just know, first of all, I'll tell you where the Achedin ka voices will come. Yes, Achedin for us. But before that, I want to remind that the party which he represents has not given any Achedin to the people there, even per the Ma Mati Manush slogan that they follow. Because the cut money group, the Tolabasi group, is not allowing the good deeds to go down. Whether of TMC's good activities or the government, central government's good schemes, both TMC schemes and the government of India schemes are not reaching the common people. The Tolabasi is like a huge iron filter. It doesn't seep through. Therefore, for Member Sagarika Ghosh, who have certainly seen her fiery anchoring in television channels before 2014. I've even participated in some of her debates. I would like to say, sir, Achhe Din for us is tirelessly serving the nation so that the common people benefit, and I will explain. We are tan samarpit, man samarpit, and desh ke liye ye jeevan samarpit. And through you, sir, I would like to tell Member Sagarika ji, instead of questioning from a biased political perspective, ask a common citizen, ask anywhere, Bengal or anywhere, who have directly benefited from our schemes. They're transformative. 55 crore Indians, if you ask them, especially women, empowered with bank accounts under Jan Dhan Yojana, अच्छे दिन आए हैं कि नहीं, जरूर बोलेंगे अच्छे दिन आए हैं, क्योंकि जन धन अकाउंट उनको मिला. Ask 4 crore families who received PM Awaaz Yojana, Jan Dhan, PM Awaaz Yojana, अच्छे दिन है कि नहीं, अच्छे दिन है बोलकर. Ask more than 12 crore rural households enjoying the dignity of toilets under Swachh Bharat mission. अच्छे दिन है. Ask 12 crore rural households receiving tap water under Jal Jeevan mission. अच्छे दिन है. Ask over 10 crore families liberated from smoke-filled kitchens under PM Ujjwala Yojana connections. अच्छे दिन है. Ask beneficiaries buying affordable medicines from 15,300 Jan Aushadhi Kendras at 50 to 80% cheaper rates. Achhe din hai. Ask 37 crore citizens protected by Ayushman Bharat's 5 lakh health insurance cover. Annually 5 lakh. Achhe din hai. Sir, 68 lakh street vendors provided with credit support under PM Swanidhi, they are all guaranteed by Prime Minister, and the sovereign guarantee provided. They don't need to give any security or papers to be given or gehna being given or gold being given. Achhe din hai. Ask beneficiaries of over 50 crore loans sanctioned under PM Mudra loan. Achhe din hai. So, Achhe din, sir, I want to say this. अच्छे दिन उन्हें ही दूर लग सकते हैं जिनके लिए शासन का मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार और तोलाबाजी है. Sir, Member Priyanka Chaturvedi, I'm not sure if she's here. She spoke about cesses and surcharges. I want to underline, sir, I'm sure the honorable member is quite informed on this matter. It's not a novel tax that we have brought, cess or surcharge. It's been for a very long time a part of India's fiscal policy. Health and education cess and surcharge, for instance, were introduced in 2004.
And as per Article 270 of the Constitution, cesses and surcharges are not shareable with the states. It's constitutionally clearly said. So for us to be told, you are not doing it, no, that's how the framework is. However, the receipts of levy of cesses are for meeting specific expenditure of the union government, be it education, be it health, be it road, be it transport. And contrary to the claims, sir, that states do not benefit from cesses and surcharges, I'd like to clearly say these are the funds which are being used for centrally sponsored schemes like Manrega, National Food Security Act, and these schemes are either predominantly or fully funded by the center, but implemented by the states. Thereby, it benefits them. Sir, for example, Samagra Shiksha midday meal schemes are all funded by these cesses and surcharges. The states are the ultimate beneficiaries of cesses, as the cess collection are spent in the states itself. I want to underline the fact, sir. In the 6 years between 2019 and 20, and 24 to 25, 1920 to 24-25, 6 years, the cumulative utilization has exceeded collections, with 105% of the total cess collected already utilized. That is, in the 6 years, amount collected under cesses and surcharges is 15.14 lakh crores. What was utilized by the states? 15.97 lakh crores. So much more than what is collected in cesses and surcharges have actually gone to the states. So central government does not sit with that money because these are collected for specific reasons. So I literally come to the last one thing. Before I say that, the last point, I was quite fascinated by Honorable Member Thambidurai's intervention when he was talking, because we often hear statements. And one or two points which Honorable Member Thambidurai said is something which is important for us to recollect. He said, if I've heard him right, the overall outstanding liability of Tamil Nadu is more than 8 lakh crores. I guess member said that. And during the DMK period, 4 lakh crores have been taken in addition. This 8 lakh crore, 4 comes during the DMK rule. We don't know whether where the money has gone. And the DMK members criticize here about the central government. I'm indeed grateful to Member Thambidurai for having said that. And he also spoke about the scams where there are raids and so on. But I want to use this opportunity to talk about tax devolution to Tamil Nadu, sir. Sir, 58,021 crores has been budgeted as tax devolution for the upcoming year, 25-26, which will start from day after tomorrow. Tax devolution to Tamil Nadu between 2004 and 14 was 94,971 crores. Between 2014 and 24, which is the last year, we are not including this year, 2,92,013 crores, which is 207% more. Grants and aid and from Government of India during 2004 to 14 was 57,925 crores. Now, meaning 2014 to 24, 2,55,875 crore, 342% increase. So, if I'm comparing only 2 periods, sir, I would like to say net proceeds of shareable central taxes to states under finance commissions. Yes, I'm just going to read that. Will you please just hang on? I'm giving the percentages. 12th Finance Commission, sir, 2005 to 10, 30.5%.
net proceeds of shareable central taxes to states under finance commissions. 13th Finance Commission, 2010 to 15, 32%. 14th Finance Commission, 2015 to 20, 42%. 15th Finance Commission, 2020 to 26, 41%, and that is 1% reduction because of the UT, which is J&K. Now, sir, I also want to underline the fact that the Finance Commission, 14th Finance Commission, when the report was submitted and 2014 Honorable Prime Minister received the report and the cabinet went through it and so on, there was one recommendation, sir, which is very important, because I've heard member John Brittas also talking about central schemes, Priyanka Chaturvedi ji talking about, oh, central sector schemes and so on. That Finance Commission, which actually raised the devolution from 32 to 42%, had said, you may please close down all the central sector schemes. Now that the devolution is far more than before from your hands to the state, close the central sector schemes. You shall shut it. No centrally sponsored schemes. But Prime Minister Modi, having been a chief minister in a state, understanding the requirements of the state, said, no, I will continue with these two schemes as well. So if we are being repeatedly told, the Finance Commission gave this finance, he is actually keeping in mind the states and their priorities, did not go by that recommendation, which said you can shut these schemes. Having given from 32 to 42, please, you can shut it. 32 to 42 is also accepted, but this suggestion is not accepted, and we still go on funding the central sector schemes and central sponsored schemes. So please, we need to please put it in context rather than hurry to conclude about. Sir, Kerala, I have member Santosh Kumar. And John Brittas, of course, has sought your permission not to be here today. With this, I will finish, sir. I won't take much of your time. Kerala has received 1.57 lakh crores in 2014 to 24, the current reference period, which is an increase of 239% over the UPA period. How much did they receive during 2004 to 14, sir? 46,300 crores. What are they receiving now? 1.57 lakh crores. Kerala is being differentiated, discriminated. Please, we follow what the recommendation of the Finance Commission is, and that is what is going to you all. And that is not lesser than what you received earlier. Grants and aid surged by 509%. Percentages. What did they receive in 2004 to 14? 25,630 crores. What are they receiving during 14 to 24? 1.56 lakh crores. Sir, over and above this, what the Finance Commission did not suggest, and I entirely give the credit to Honorable Prime Minister, that post-COVID, because states also will have to revive their economies faster, he made it a point to say, please give a special assistance of capital expenditure for states. 50 years interest-free. Kerala received 2,715 crores. That was not even mentioned by the Finance Commission. But here we go. We made sure that Kerala also receives and doesn't suffer. So Kerala has never been, and I like to say this with a sense of responsibility, has never been supported better than this government, the way in which Prime Minister Modi has supported it. In terms of actual numbers, in terms of actual projects. And I'm not naming the project. There was a project, sir, where highway has been extended from one destination to a point, and from the other destination to this point, but midway, there was it the Kollam Junction or something, which was waiting for 40 years. It was Prime Minister Modi who completed that little bit. It was litigated upon. From A to B, the road goes, but there is one little patch, which because it was in the courts and other things, every government gave excuses, it wasn't completed.
Prime Minister Modi made sure that every hurdle was crossed legitimately, and that project was completed. 40 years for a road. That's fine, but wasn't it taken earlier? The initiative was not taken by state government earlier. It required Prime Minister Modi to come. Pehle karna tha na. Don't, please. 40 years they sat with it. Different central governments. They didn't do it at that time. State government also took initiative. Of course, it's your land. You will have to take initiative, but you didn't do it till before Prime Minister Modi came. So, sir, sir, I'll tell you. Sir, I'm sorry to have to bring this. I wouldn't have said it here in the House. And these are not my words. But it's hurting to hear Kerala repeatedly saying that you're discriminating against Kerala. You're discriminating even in our borrowing. April 1st, 2024, on a matter related borrowing limits, which is definitely supervised under Article 293. Sir, you are an expert on the Constitution. I don't need to talk. Article 293, Center has the authority to look at the borrowings of the states. In that matter, they went to the Supreme Court, sir. And on April 1st, I'll just read two observations which were given. I never would imagine, I didn't think I'll be having a day when I have to say this, because all right, it happens in court, you have a difference, I have a difference, we go to the court. But repeated, in spite of giving all the facts, repeatedly alleging, oh, Prime Minister Modi doesn't do this for Kerala, doesn't do this. I want to quote the court's words, Supreme Court's own words. Quote, if the state has essentially created financial hardship, if the state, I repeat, if the state has essentially created financial hardship because of its own financial mismanagement, such hardship cannot be held to be an irreparable injury that would necessitate an interim relief against the union. I didn't say it, unquote. This is Supreme Court, sir. Another line that they said, we, again quote, we find prima facie that there is a difference in the mechanism which operates when there is underutilization of borrowing and when there is an overutilization of borrowing. The plaintiff, that is the state, Kerala, has not been able to demonstrate at this stage that even after adjusting the over-borrowing of the previous year, there is fiscal space to borrow, unquote. They thought they had more fiscal room to borrow and kept asking us. We said, you don't have the room. They went to the court, and the court said, prima facie, we don't. And the final quote, sir, again, quote, we find prima facie merit in the submission of the Union of India that after inclusion of off-budget borrowing for the year 22-23 and adjustments for over-borrowing of the past years, the state has no unutilized fiscal space, and that the state has overutilized its fiscal space, unquote. Not my words, sir. And I wouldn't have wanted to bring this here because I want to work with the states, and I will say this again, I want to work with the states so that they are not in distress, but I have my limits under Article 293. And these are not my perception, court's words. One last quote from the CAG's audit report on Kerala state finances, report number 5, October 2024. I didn't intend to say it here, but when you repeatedly allege that the central government is discriminating against Kerala, I'm compelled to say this, sir. I'm sorry. The CAG audit report, I'm quoting, in 22-23, very important observation, sir. Quote, in 22-23, 97.88% of Kerala's debt receipts were utilized for repayment of outstanding debt. This indicates a poor debt management by the state government, unquote. The second one observation derived from the CAG report, sir, in the fiscal year, I'm not quoting here,
In the fiscal year 23-24, Kerala state government allocated, very important, Kerala state government allocated 94,649 crores or 70% of its estimated revenue receipts towards committed expenditure, which is salary, interest, and pensions. That's a committed expenditure, sir. And certainly, therefore, the revenues will have to improve. You will have to improve your revenues. And if that is required, you can't constantly say it is because you have not given me my due. Okay, sir? And the last thing which I have to say here, therefore, the truth is Kerala's fiscal crisis is a result of both the UDF and LDF government's reckless policies and not the fault of the central government. All right. So, sir, I want to then say, so did it stop us from doing work in Kerala? No. As I said, Prime Minister Modi doesn't differentiate between states. He does for everybody. So what was given in August 2004, Union Cabinet approved the industrial node in Palakkad. Kannur Airport operationalized under RCS Udan. Site clearance granted for construction of a greenfield airport at Kottayam. Over 1,300 kilometers of national highway constructed in Kerala since 2014. 1,126 kilometers of national highway corridors being developed under Bharatmala Pariyojana in Kerala. India's first water metro inaugurated by PM Modi in April 2023. Kochi Metro inaugurated by PM Modi in 2017. 25 kilometers of rail operationalized since 2014. Huh? Old story. Old story. Money. It is still money. Old story. 60 years ago, when 60 or even more, when when Chief Minister, wait, you are from Communist Party, at least have this kind of a gratitude to remember this. When Namboodiripal's government was thrown out by the Congress. Until today, old as that, not this. You are using these roads even today. You are using these airports even today. But do remember the day when democracy was killed by an elected government being thrown out. Where were you at that time? Is that old or not? Metro abhi chalu nahi hai. Metro chalu nahi hai. Paisa kiske liye? Of course, you are a Communist Party member. You're sitting in alignment with Congress. Congress is the one which throw you out. You don't want to remember that? Why are you being Namboodiripal? With respect, I will bring Namboodiripal. That was the patron of communism in India. You want to forget Finance it? Minister. Honorable Finance Minister. Sir. That was the first ever left government in the world. That's right, sir. Right. First ever elected communist government in the world. You're right, sir. Thank you for putting in that. Sir, I am astonished that relevance here. You said these are all old. That's old. I want to say, Santosh Kumar ji, sir, these are still in utilization. People are using these ports and everything else even today. And he says this is old. But for me, even that 1959 throwing out the communist government is not old. Shows how Indian democracy was misused by the Congress. I'll never forget that. I'll never forget that. And a Communist Party member tells me what's the relevance of it. It hurts me no end, sir. It hurts me no end. I'm surprised. You should never forget it as long as you're fighting for your ideology. A minute ago you said, in ideology we'll fight with you. Arey, ideology bhul gaye aap. Bhul gaye. Namboodiripal ko bhul gaye bhai. Sir, Kochi Metro inaugurated by Prime Minister Modi in 2017. It is still operational. Santosh Kumar ji uses it, but he says, what is it? That's old. He uses it, but he's forgotten. Not even a decade is completed, sir. 25 kilometers metro rail operationalized since 2014. Record railway budget allocation of 3,042 crores. 125 kilometers of new tracks constructed in Kerala since 2014. 2 Vande Bharat trains are started. 35 railway stations are being redeveloped.
These are old, maybe for Santosh Kumar, but the people of Kerala remember all this. Social infrastructure, sir. I'll finish with this. 1.6 lakh houses built in PM Awaaz Yojana. 2.5 lakh household toilets constructed under Swachh Bharat Mission. Over 21 lakh tap water connections provided under Jal Jeevan Mission. 82 lakh Ayushman cards provided. 1,500 plus Jan Aushadhi Kendras operationalized. 66 lakh Jandan accounts opened. Accounts are running even today. People are using it. 1.6 crore mudra accounts sanctioned. They're all now people living in there and benefiting because they were denied all this earlier. Now it's being given. Thank you very much. Secretary General, message from Lok Sabha. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 27th March 2025 passed the Immigration and Foreigners Bill 2025. I lay a copy of the said bill on the table. I shall put the motion regarding consideration of the appropriation. Honorable Finance Minister, clarification. Left to you. Yes. Left to you, sir. Honorable. Honorable, Yes, it's there. I'm Both mics grateful- are there. I'm grateful to the Honorable Finance Minister for clarifying the sections regarding pensions and the validation. I understand that. It was section 142 to 145 of the original bill. It has now become 147 to 149 or 50. That's correct. And therefore, in order to validate, she has given retrospective effect from 1st June 1972. That is also correct, and I'm grateful. But I want to know if it retrospective for 1st June 72, and it is only purposes validation of the past, why is there not a sunset clause at the end? This power, which she's taken under the original bill, section 144, will continue for the future also. So having given retrospective effect from 1st June 72, which is correct, she should add a sunset clause 31/3/2020. Honorable Finance Minister. Oddly, sir, I'm not getting into the details. Now newer pay commissions are also coming. They'll also talk about it. And based on that, the whatever has got to be affected will take place. So we'll wait for the new Central Pay Commission report, and from there we'll take it. I shall first put the motion regarding consideration of appropriation number 3, Bill 2025 to vote. The question is that the appropriation number 3, Bill 2025, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 4 and the schedule stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 4 and the schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman ji to move that the bill be returned. Sir, I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. I shall now put the motion regarding consideration of the Finance Bill 2025 to vote. The question is that the Finance Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted.
We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 150 and the first to third schedules stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 150 and the first to third schedules are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman ji, to move that the bill be returned. Sir, I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. Honorable members, the House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 20th March 2025. Breach of privilege is a serious matter. No, nothing, honorable, nothing else will go on record. Nothing else will go on record. I have declined with a deep sense of anguish and pain that we rush to invoke breach of privilege. We rush to the media, give it traction, try to tarnish image. And I have said on a number of occasions, this house will not be a platform to ruin reputations of people. We have to protect. I therefore, honorable members, on this sensitive occasion, honorable members, on this sensitive occasion, I seek to invite your attention that Ethics Committee in the entire country, the largest democracy, was formed for the first time in Rajya Sabha. This was headed by a very distinguished parliamentarian, veteran leader, former Chief Minister of Maharashtra, and a senior cabinet minister, Shri S.B. Chauhan. A first of its kind. The report rendered on 1st December 1998, to which I adverted earlier also, after wider consultations across parliamentarians, legislatures, and public associations, a report was rendered. In that report, amongst numerous other situations, Shri S.B. Chauhan report says, firstly, members must conduct themselves in a manner that upholds
the dignity of Parliament and preserves their personal credibility. Secondly, members bear the responsibility of maintaining exemplary standards of morality, dignity, decorum, and values in their public conduct. Honorable members, now Ethics Committee is headed by a distinguished parliamentarian, Shri Ghanshyam Tiwari. I am tasking the Ethics Committee to look into SB Chauhan Committee report on ethics and take note of the intervening situations, mostly brought about by technological developments and social media, and evolve a mechanism, fresh guidelines for members for adherence. क्या आपने चंद्रयान 3 को लॉन्च होते देखा है या कैसे चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में सफर करता है और कहां-कहां जाता है? आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा नहीं, लेकिन आप चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग को देख सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं, और ऐसा संभव होगा वर्चुअल रियलिटी के जरिए। ठीक उसी तरह से जो लोग किसी कारण से कुंभ नहीं जा पाए, वो भी अपने घर बैठे कुंभ का उसी तरह से अनुभव ले सकते हैं जैसे लोग वहां जाकर लेते हैं, और ये सब संभव हो पा रहा है ऑगमेंटेड रियलिटी से। भारत में वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी इंडस्ट्री नई है, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रही है। वीआर और एक्सआर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बीते 4 महीने से देश भर में एक्सआर क्रिएटर हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा ही एक हैकाथॉन नोएडा में आयोजित किया गया। हमारा मेन पर्पस यही है कि हम यहाँ के इंडस्ट्री को कैसे बताएं कि ये टेक्नोलॉजी को आप अडेप्ट करो। इसके बहुत सारे यूज केसेस है, रियल एस्टेट में है, एजुकेशन इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर में, उसको यूज केस उसमें वो कंट्रीब्यूट करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, उनके लिए घूमना एक ऐसा सपना है जो शायद उनके लिए पाना बहुत मुश्किल है, वो सिर्फ सपना ही रह जाता है। वीआर हेडसेट के माध्यम से वो सारी की सारी चीजें एक्सपीरियंस कर पाते हैं जो शायद उन्होंने सोची भी नहीं थी। आजकल वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का उपयोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, टूरिज्म और एजुकेशन सेक्टर में तेजी से हो रहा है। इस सेक्टर में नए-नए स्टार्टअप आ रहे हैं और नए-नए टूल्स बना रहे हैं। What we want to bring with this project is we want to bring a more entertaining and engaging kind of content which will be delivered to more people in a more interesting way. इसका पूरा उद्देश्य यही है कि आम जनता तक एवीजीसी का जो हमारा सेक्टर है इसको पहुंचाना, और इसमें जो हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनको बढ़ाना, स्किल डेवलपमेंट, और साथ ही साथ जो इस क्षेत्र के स्टार्टअप्स हैं उनको एक बूस्ट देना। देश में पहली बार वेब्स समिट होने जा रहा है, जिसके जरिए ऑडियो, वीडियो, गेमिंग, कॉमिक्स सेक्टर को बूस्ट मिलेगी। इसके लिए बीते 4 महीने से देश भर में हैकाथॉन हो रहा है। हैकाथॉन में 2200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इनमें से टॉप 40 टीम का चयन किया गया है। इनमें से 5 टीम को वेब्स समिट में शामिल होने का मौका मिलेगा। 2030 तक ऑडियो, वीडियो और गेमिंग का बाजार $26 बिलियन का होगा। ये क्षेत्र आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मुहैया कराएगा। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। Honorable members, on 26th March 2025, I received a communication, notice of question of privilege against Shri Amit Shah, Minister of Home Affairs, from Shri Jairam Ramesh, Chief Whip, Indian National Congress. While pending his signatures, Shri Jairam has signed as 26th of May. This is something which can be overlooked as does not change the context. This notice has been given by Shri Jairam Ramesh under Rule 188 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of State Rajya Sabha against Shri Amit Shah, Minister of Home Affairs. And his assertion is that aspersions have been cast on Srimati Sonia Gandhi, member of Rajya Sabha and chairperson of Congress Parliamentary Party. Shri Jairam Ramesh has in particular indicated
that on 25th March 2025, Shri Amit Shah, Minister of Home Affairs, while replying to the debate on the Disaster Management Bill 2024, had inter alia stated as follows, I quote, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष कांग्रेस शासन में बना और पीएम केयर्स नरेंद्र मोदी जी के शासन में बना। एनडीए के शासन में, कांग्रेस के शासन में एक परिवार का ही नियंत्रण होता था। मान्यवर इसके अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष सदस्य होते थे। मान्यवर he further goes on to quote, and I quote, कांग्रेस के अध्यक्ष, सरकारी फंड में कांग्रेस के अध्यक्ष क्या जवाब, प्लीज प्लीज प्लीज, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नो प्लीज प्लीज, nothing will go on record. This is a serious matter, and I have very frequently noticed that with respect to breach of privilege notices, which I'll come a little later, we need to evolve a protocol. I'll come to that a little later. कांग्रेस के अध्यक्ष, सरकारी फंड में कांग्रेस के अध्यक्ष क्या जवाब दोगे देश की जनता को, ऐसा मानते हैं, कोई पढ़ता नहीं, देखता नहीं। Honorable members, thereafter, some members took exception, and the Honorable Home Minister announced he will authenticate his statement. Shri Jairam Ramesh, after indicating this, has requested that in view of the foregoing, privilege proceedings may be initiated against Shri Amit Shah, Union Home Minister. Honorable members, this has found wide traction in media. If a communication is sent to the chair, as has been indicated in the bulletin, and a long-standing practice, it should not get publicity. Ultimately, the chairman or the house has to take a call. But the traction has been very widespread. I have taken note of the authentication wherein Shri Amit Shah, Honorable Home Minister, has indicated, I quote, मैं राज्य सभा में दिनांक 25 मार्च 2025 को आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 की चर्चा के दौरान मेरे द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF पर की गई टिप्पणी को सत्यापित करते हुए भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 जनवरी 1948 को जारी प्रेस विज्ञप्ति को आपके समक्ष रखता हूं। Honorable members, he has authenticated a document which is January 24, 1948, Press Information Bureau, Government of India, Press Note, Prime Minister's National Relief Fund, Pandit Nehru's appeal. Pandit Nehru has issued the following appeal. I am focusing, honorable members, the relevant part, it will be available to you. I am therefore starting a fund called, quote, the Prime Minister's National Relief Fund, unquote, and I invite donations to this fund. And then the constitution of the fund is given. It will be managed by a committee consisting of, number 1, the Prime Minister, number 2, the President of the Indian National Congress,
the Deputy Prime Minister, and there are some other members. Honorable members, I have carefully gone through the debate and what the Union Home Minister asserted. Home Minister focused in categorical terms that this was the practice. Sir, this is too clever by half. Honorable members, I'm coming to that. I'm coming to that. Nothing will go on record. Nothing will go on record. No, nothing will go on record. Nothing. Honorable members, let me reflect. I have carefully gone through it. I find there has been no transgression. There has been absolute adherence to truth, which is vindicated by a document that is available to the honorable members. And that being the situation, I cannot persuade myself to accord any acceptance to this notice of question of privilege against Sri Amit Shah, Minister of Home Affairs. जागू मैं सारी रहना सगन बनबो। भारत का मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत लगातार बड़े बदलाव का गवाह बन रहा है। इस बदलाव में वेव्स भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। इस भव्य मंच पर युवा प्रतिभाओं के लिए गायन प्रतियोगिता वाह उस्ताद एक बेहतरीन अवसर के रूप में उभरी है। उत्साह से लबरेज प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। वाह उस्ताद एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आगे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू वेव्स। बहुत कुछ सीखेंगे और एक एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। We are extremely honored and grateful and thankful to Doordarshan, Ministry of Information and Broadcasting for bringing out an initiative like Waves and also for making us the Gharana a part of it. इन लोगों का सफर यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद चुने हुए प्रतिभागी संगीत जगत में अपना लोहा मनवाने के लिए अगले राउंड में हिस्सा लेंगे। वाह उस्ताद जैसी पहल के साथ वेव्स केवल एक समिट नहीं है, बल्कि ये विभिन्न प्रतिभाओं के लिए एक लॉन्च पैड है जो देश के युवाओं को एक वैश्विक मंच दे रहा है। इस तरह की पहलों के साथ मनोरंजन जगत का भविष्य बेहद सुनहरा नजर आ रहा है। सिद्धार्थ भारद्वाज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। माननीय सदस्यगण, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कुछ विषय रखा था माननीय संसद सदस्यों के स्वास्थ्य के परीक्षण के विषय में। उसके लिए यहाँ पर संसदीय शोध में प्राइड द्वारा मेडिकल कैंप चालू है जिसमें आप जांच करा सकते हैं और भविष्य में आपके सुझावों के आधार पर और व्यापक जांच परीक्षण सभी माननीय सदस्यों की, सचिवालय के सभी कर्मचारियों की कराने की योजना बनेंगे। और एक विषय माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय नौजवान युवा साथी मिले थे अलग अलग विषयों पर, जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपने तर्क, संवाद, अपने दृष्टिकोण रखे हैं। बहुत अच्छे दृष्टिकोण, तर्क रखे हैं। मैं माननीय सदस्यों से भी आग्रह करता हूं कि वह भी संसदीय समिति को अपने अपने तर्क, संवाद, चर्चा और चिंतन रख सकते हैं। वेव्स के यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज में युवा फिल्म निर्माताओं का उत्साह और जोश सातवें आसमान पर है। और ये जोश हो भी क्यों ना, इतने बड़े मंच पर उन्हें प्रतिभा, रचनात्मकता और कल्पना दिखाने का भरपूर अवसर जो मिल रहा है। यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज को 2 श्रेणियों 12 से 15 और 16 से 19 वर्ष में बांटा गया है। इसके अंतर्गत युवा फिल्मकारों को मात्र 60 सेकंड में अपनी कौशल और प्रतिभा को फिल्म के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाना है।
यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज का मकसद प्रतिभागियों के बीच नवाचार, कहानी कहने की कौशल और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। भारतीय मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड पे पहुंचाने के लिए। व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल के उपाध्यक्ष चैतन्य चिंचलीकर ने वेव्स में मीडिया और मनोरंजन उद्योग में वैश्विक पहचान बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर जोर दिया। पहला स्तंभ है सरकार की इच्छा शक्ति और क्षमता, जो सरकार की नीतियों का दर्पण है। वहीं दूसरा स्तंभ है एक स्थान, जहां से भारत की फिल्म उद्योग की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच सके। तीसरा स्तंभ देश के प्रतिभाओं के विकास पर ध्यान देना है। इंडिया को, भारत को दुनिया के मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अग्रिम पोजीशन लेना है, उसके लिए ये वन ऑफ 3 पिलर्स है और ये बहुत जरूरी है एज वन ऑफ 3 पिलर्स, जो काइंड ऑफ where it is incumbent, it is almost mandatory that you have to have all 3 pillars if you want to make sure that India is at somewhere at the top. चैतन्य चिंचलीकर का मानना है कि वेव्स में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं और रचनात्मकता का एक बेजोड़ संगम देखने को मिलेगा। वेव्स फिल्म निर्माताओं को कहानी कहने, अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ साथ आत्मविश्वास पैदा करने का काम करेगी। तो तैयार हो जाइए रोमांच और विविधता से भरपूर वेव्स के लिए। कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा महोत्सव होने जा रहा है और ये तो पहला चरण है इस महोत्सव का। आगे आने वाले समय में इस वेव्स समिट को हम एक मूवमेंट मान सकते हैं, जो कि भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मतदान, मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। खेलो इंडिया ये कार्यक्रम नहीं है, ये एक मिशन है। खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। हौसलों की उड़ा है, हर कदम एक पहचा है, जीत के है इरादे, हम भारत की शान है। इंडिया, जीतेगा इंडिया। रग रग में जोश है, हर धड़कन में जुनून है, उम्मीद को जीत में बदले, सपनों को मुमकिन कर दे। रण मिट्टी तेरी आन बनके, हौसलों की शान बनके, निशाना तान ले तू, अपना हार तू। खेल नहीं ये जुनून है, हर दिल की धड़कन में धूम है, उम्मीदों के आसमां को छू ले तू। खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। तो हम पैरालंपिक में भी हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा गाड़ने के लिए
मेरे दिव्यांगजनों को सामर्थ्यवान बना रहे हैं। खेल नहीं ये आग है, हर दिल में एक विश्वास है, नए भारत की आदर्श है, कुछ करने की आस है, रंग भरे सपनों से, भारत के सारे अपनों से, उम्मीद को रोशन होने दो, अब जीत का डंका बजने दो, खेल टेबल टेनिस या बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग या शूटिंग, तू निशाना ना हार तू, अब आगे भाग। खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, जीतेगा इंडिया। किसी भी देश को परिभाषित करने के लिए उसकी संस्कृति काफी है। किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी सांस्कृतिक विरासत है, और इन सब में जो सबसे प्रामाणिक स्तंभ है वो है भाषा का। It has been said, and rightly so, the best way to conquer a territory is not to overtake it physically, to overtake its culture, to destroy its language. और ये एक सुखद बात है स्वतंत्र भारत में, और हाल के वर्षों में भाषा पर बड़ा भारी जोर दिया जा रहा है। हमारी हर भाषा, मराठी उनमें प्रमुख है, ज्ञान का भंडार है। जन्म से ऐसी भाषाएं होती हैं जिनमें हम सपने लेते हैं, हमारे मन में विचार आते हैं, पर कालखंड चालू हुआ करीब 1200 साल पहले, 1300 साल पहले। तब तक सब कुछ उत्थान पर था, सब ठीक चल रहा था, दुनिया हमारी ओर देख रही थी, हम ज्ञान के भंडार थे। नालंदा, तक्षशिला जैसी संस्थाएं हमारे यहां थी। फिर आक्रमणकारी आए, they were very oppressive, very cruel, brutal for our language, for our culture, for our religious places. Barbarity and vindictiveness was in extremity. Enormity can be seen from the perspective कि हमारे दिल पर चोट करने के लिए हमारे धार्मिक स्थल के ऊपर ही अपना स्थान बना दिया और हमारी भाषाओं को कुंठित कर दिया। यदि अगर हमारी भाषा नहीं पनपेगी तो हमारा इतिहास भी नहीं पनपेगा। अब इतिहास हमें दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं देखना होगा, हमें स्वयं को देखना होगा। हमारी भाषा और भाषाएं, दे आर ज्वेल्स इन आवर सिविलाइजेशन। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है कि हमें कोई पाठ पढ़ा सके कि व्हाट इज इंक्लूसिविटी। भारत एक अकेला देश है जिसकी भाषाएं दुनिया में स्थान रखती हैं। Language is not only literature. Language is beyond literature. Because that literature defines contemporary scenario existing then
The challenges faced then, and it also takes note of knowledge and wisdom. India is a land of rich languages. Sanskrit, Bangla, Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, several languages. Even in Parliament, simultaneous translation takes place in 22 languages. Our civilizational ethos tells us inclusivity. Should there be confrontational stance on language in land of Bharat? What a moment of pride for everyone when languages were put in the classical languages status recently. We have to nurture every language. Our languages have global outreach. They are gold mine of literature and the literary pieces of knowledge and wisdom. Vedas, Purans, our epics, Ramayana, Mahabharata, Gita. Formed as the 29th state of India, Telangana came into being on 2nd of June 2024. The Telangana region was part of the Hyderabad state from 17 September 1948 to 1st November 1956 until it was merged with Andhra state to form Andhra Pradesh. After decades of movement for a separate state, Telangana was created by passing the AP State Reorganization Bill in both houses of Parliament. The state has an area of 1,12,077 square kilometre and has a population of over 3.5 crore, according to 2011 census. The literacy rate stands at 66.54%, with male literacy rate at 75.04% and female literacy rate at 57.99%. Telugu is the official language, along with Urdu and Hindi. English is widely used for official purposes. Key contributors to the economy are sectors like IT, pharmaceuticals, biotechnology, agriculture, and textiles. Notable tourism attractions are Charminar, Golconda Fort, and Chowmahalla Palace, along with Ramoji Film City, Warangal Fort, and Thousand Pillar Temple. Dasari Kondappa is the Padma Awardee from the state. Sportspersons are Sania Mirza, who is an international tennis star, and Mohammad Azharuddin, Indian cricket team's former captain. Major Rohit Suri is the military awardee. He was awarded the nation's second highest peacetime gallantry award, Kirti Chakra, for his outstanding courage, leadership, and supreme sacrifice. And in this edition, Sunset TV speaks exclusively to the Governor of Telangana. Hello and a very warm welcome, viewers. You're watching the special presentation of Sunset TV State Scan with your host Kriti Mishra. And this edition is streaming from Raj Bhavan of Telangana. And joining us is a very special guest, Honorable Governor of Telangana, Mr. Jishnu Dev Verma. So welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. Namaskar. So let's begin talking about early political years of your life. You joined the BJP in the early 1990s. Then, of course, you became the Deputy Chief Minister of the state of Tripura. Take us through the early political journey of your life. We started our political journey actually before 90 also, but actively from 90 because I stood in elections from early 90s, so they counted from 90s. But we were in a political activist prior to that date. And in those days in Tripura or Northeast as a whole, BJP was not a very well-known party. It was the Congress, the other party of the Congress, regional parties of Northeast, and in Tripura it was the Congress and the CPIM, which were well known, and people thought I was some sort of crazy to join a party which didn't have very much presence in Tripura or even in the Northeast. So we were, we worked from the grassroots level to form a party and to struggled a lot to establish a party, and it is very, very good to see that the party has flourished and we have a strong presence and governments in the Northeast, Manipur, Tripura, Assam. We are in alliance with other states. So it's very fruitful to see that the seedling that we planted has bearing so much, it's become a huge tree, it is bearing so much of fruit, and people are prospering. Northeast has changed this, its landscape from being a very troubled area to a developing area.
And just now the Prime Minister celebrated a huge celebration in Bharat Mandapam, Mahotsav, Ashtalakshmi Mahotsav. It's a beautiful thing that today Northeast is in the center of things. There is no question of periphery and mainland. We are very much part of the mainland activity, whatever you call the mainland. We are very much there. There's no question of periphery and one corner, this corner. Today Northeast is in the center stage of Indian development. That is one of the wonderful things that we have seen. So I can see your keen interest in the development of Northeast, and I'm also reminded of the fact that you served as the chairman of the Northeast Regional Power Committee. Now the government has undivided focus on Northeast. It says that it's not about look east. Now the focus is on act east. How has that vision translated into reality and changed the landscape of Northeast? The whole slogan, look east, was something, very quite vague, because it projected Northeast as some mysterious land which was far away, a Shangri-La type of thing. But Modi ji changed the whole thing and said, act east. We must develop Northeast faster than anything else, and the development must be sustainable there, because the ecosystem are very fragile there. So we started this, and when I was the power committee chairman, we put a lot of stress on renewable energy, because that will put less stress on the ecological system of the region, and it would be friendly to the tribals, the marginalized people, and we wanted to make them power generators. How to get the tribals into the into the fold, and that was very, very interesting, inspiring journey that I had. I was there for some time, and all the power ministers of the Northeast contributed a whole lot of innovative thinking to how to make power inclusive. Because power was just not electricity. Power is power nowadays. Earlier, power meant electricity, transformers and isolators and electric lines. Today, power means lighting up people's lives. It's the question of lighting up people's life, and we put a lot of stress on renewable energy, which is, I think, very sustainable and very good effort. And how was the stint of being the Deputy Chief Minister of the state of Tripura? I was there 5 years, Deputy Chief Minister, looking after very key portfolios like rural development, panchayats, and power, and finance, science and technology, and a whole lot, planning and coordination. It was very fulfilling because there was so much work to do. The earlier governments had left the development plan was ad hoc. We want to do something more sustainable, more holistic. The holistic approach to development under the leadership of Modi ji took place, and we all put in our efforts and a lot of hard work. And today Tripura is on the way, marching ahead proudly, in India, and becoming one of the best governed states. Repeatedly, by a lot of organizations have voted it to be one of the best managed or best administered states. And it's a matter of pride that today we have in place of one national highway, we already have 6, and 3 more en route. So there's tremendous change that is taking place. People who visit Tripura after 5 years, 6 years tell me that there's tremendous change. We don't see so much of it. We live there all the time, but people who come after 5 years, 6 years to Tripura have told me that there's tremendous change in Tripura. And then I look around, I see, yes, it has changed, and it is very nice. And the effort now is to make development inclusive. How to take to the Janjati, the people of the tribes, indigenous people along with us. Because if we say sabka saath, sabka vikas, they have to include. And sabka prayas, we have to include them in their effort also. They must make efforts to make their own development, and the government has to be a catalyst in that. So we are very, putting a lot of stress on inclusive development, and that is very nice. Absolutely, sir. The government has to be the catalyst of progress. And of course, we're seeing the changes in the state of Tripura. But talking about your journey from Tripura to Telangana, you were sworn in as the governor of the state of Telangana on 31st of July, 2024. Tell us about the journey so far. I thank the, Honorable President and the Honorable Prime Minister for sending me to Telangana as governor. It's a very lovely state, and city of Hyderabad is welcoming to all people and is very cosmopolitan. I meet people of all, religions, of all communities and all languages. It's a real truly cosmopolitan place, and people of Telangana are very nice and welcoming. And in Telangana also there's a lot of tribal population. There's 5th schedule going on here. So here also my effort as a governor would be to, as the state is developing,
We must see that the people who are marginalized or living in the margins, our Modi ji's policy, the last man first, that should become a reality. That would be my effort. And if you ask me now, what can the governor do? Governor's role is limited to the constitutional head. It doesn't mean that he should not work. He shall also have to work, put in something. He's come to the state. He has to try and leave his, impression on the state before he leaves. And we have, for Rajbhavan, there's already 5 villages that we have adopted, and a 6th one I have adopted, all in tribal areas. And we know the constraints of funds, and Rajbhavan doesn't have, those big funds and doesn't have so much of manpower. But we would like to make an impression by creating models which the state government can replicate, or other states can also replicate. So we are on the way to making these villages self-sufficient, stressing on, livelihood and connectivity. That's what the tribals actually require, the Janjati actually require, livelihood and connectivity. Because connectivity is modernity nowadays. Connectivity through road, through internet, through air, through train, that is what modernity is. If we define modernity is stay connected. That is what is today defines modernity or modern days. And the other one is livelihood. Because the livelihood is very important. And of course, with livelihood and connectivity, we would like to, encourage sustainability. To see that, we do sustainable development, that development does not disturb the ecology of the tribes or the, forests of the tribes or of the water. So these are very important. These are life-saving elements that, save us. And today we are safe still because there are forests there. There are trees there to clean the air for us. There's still, clean water to drink. So these are, life sustainable ecological truths that must be guarded, and that is how we are trying to progress here. Whatever we do, we'll try to do it with excellence. That's why I told my Rajbhavan staff, whatever small step also we do, we'll do it in such a way that people can replicate it. People will say, yes, this is a pilot that can be replicated, that will go into the best practices. So that will be very nice, because in Tripura, I had done a very small project, bio villages. In that we put stress, the name is bio villages, people take it for, organic farming. That's not it. It's a holistic development, and the Prime Minister has praised it in his Mann Ki Baat twice because of sustainability. It is known as Bio Village 2.0, taking a bio village one step further into connectivity and livelihoods, eco-friendly livelihoods. So that is what we are trying to do here. And people of Telangana have been very, very cooperative. I have visited many districts. I'm still visiting districts, and we will work. We will work, and we'll put that theory of the Prime Minister always first, that last man first. The last man has to develop first. Then we will go faster to Viksit Bharat. So you talked about the role of the governor. I'm reminded of a very important statement made by Honorable Prime Minister of India during the Governors' Conference, where he said that governors have to act as agent between the union and the state, and they also have to reach out to the underprivileged sections of the society. How are you trying to reach out to the underprivileged sections? Yes, that is the right thing he has said, that it is a bridge. We are a bridge between the center and the state. It divides in such a way in the constitution. And regarding, as I said, the Prime Minister always told us, whether as a minister or as a governor, I have always heard this, that, the last man must first come first. That is the concept Antodaya. Antim Vyakti ko pehle. The man standing right at the end of the line must be served first. It's not first come, first serve basis. As we say, we don't want that to happen in India. We are a civilization that talks of Antodaya. Antim Vyakti ko pehle. So that is the way we will all work, and that will bring in a holistic, development and sustainable development. So I was reading in the newspaper a very important statement made by you, that women are very important pillars of the society, and they mustn't be job seekers. They should try and become job givers. How do you see the role of women in making India a Viksit Bharat? I was a minister of SHG, self-help groups of women in Tripura. When I became minister, there was only 4,000. When I left, it was 56,000. So I always found that it is, the women are in the villages can be the generators or the dynamo of growth of the villages. If you want Suraj in the villages, Swaraj so we got in 1947. Now we want Swaraj in the Gramin Swaraj. We want Swaraj in the villages, good governance in the villages. And in that, the women have to be involved.
Because educating a lady of the house is educating the whole family. Making a lady of the house generate income, it generates for the family. That has been realized, and today there's a massive movement under the leadership of Prime Minister. There's a massive movement all over India, known as the SSG movement. Before it was tokenism. Today it is almost a revolution. Women are getting empowered, and I've heard instances of women now generating employment. Some of them have 3 lakh members under them. Some have 2 lakh members under them in the SSG groups, and they're very innovative. They plan their own activities. Earlier, the planning used to take place from top. Today, planning is taking place from below. And this is a practical thing. What the village wants, the village knows. Where the shoe pinches, the woman knows. So it is very beautiful concept the Modi has done, the SSG revolution. It is not an SSG, organization. It's like Swachh Bharat became a movement. So we are going through a women empowerment movement known as the SSG movement, self-help group movement. We have Crorepati Didis, we have Lakhpati Didis. They are all doing very well, and that's what. And we cannot leave women behind. They are half the society, half the world, half the nation. We cannot leave them behind. We have to take them along in our efforts, and the efforts have to be honest, and empowerment has to be real. And how are you trying to reach out to the youth of the state? Telangana is very vibrant. I met a lot of young entrepreneurs, and it is very, very inspiring that what they have achieved. Young people that are in the IT industry, on the pharma industry, in the health industry, or in the education industry have done wonderful job in Telangana. Some should be replicated by people in Northeast and other places of India, and they should be taken as role models, some of these entrepreneurs. And Northeast has a lot of potential. And the link between Northeast and Telangana should be strengthened. We are doing, a lot of people in Northeast are coming for medical treatment here. Many people are coming for education. So some will be going back to, Northeast and carrying with them the truth about Telangana, how much it is doing. The youth are vibrant, and the youth should be. The youth today is more aware than what we were when we were young. Youth today have more facilities. On the palm tops, they have all the information we did not have. We had to go to libraries, we had to see books, we had to read newspapers. Today, the youth are more empowered. So they have to use that empowerment for empowering the weakest. Because unless the society is empowered, unless your state is empowered, your empowerment means little. So your empowerment should be used to empower the people who are living on the margins. That is the message I would like to give the youth. And some of them are doing a very fantastic job. Absolutely, sir. And before we wind up, I was reading a very interesting thing about you. You also served as the head of the Badminton Association. Do you still get time for it? Now, don't know, but I like sports actually. I am a very sports loving person because I grew up in a boarding school where sports was compulsory. So I like football. I went to watch football match. I watched the cricket match, and I am fond of badminton. And I was very keen on badminton. I have landed up in Telangana, which is the most famous place for badminton, Gopichand Institute and things like that. So it's very nice to be involved in sports because sports teaches you many things. Actually, you learn more on the playfield than you learn in the classroom. It teaches you, companionship, teaches you how to work together, it teaches you how to, achieve something together, how to, achieve victory together. So these are very this arduous training, and how you must, be trained. It requires a lot of compassion, it requires a lot of dedication. All these things sports teach you. Sports is a great teacher. It's a great teacher, and it is a very, democratic form of interacting with each other. So this is one of the very nice platforms that sports gives to everyone. And finally, sir, your message to the people of Telangana. See, Telangana is a very progressive state, and we want to make that progress more sustainable. And I would, as I said, I would like to tell all the successful people, your success can be doubled by reaching out to the marginal people. So let us all reach out to the people living in the margins. We have to pull them up, we have to take them along for a Viksit Bharat, for a Viksit Telangana. When we say the word Viksit, it becomes as if we are looking at your bank account. It is not that. It is not that term Viksit cannot be translated into English. It's an Indian term. It means Vikas, a land with Vikas, and Vikas means fulfillment. So nothing is fulfilled unless we take the women along,
unless we take the marginalized people along, unless we take the tribals along, unless we take the SCs, everyone along with us, then it will be a fulfilled Bharat, a Viksit Bharat, a Vikashshil Bharat, as we say. As in, in Upanishad, it has been defined, Purnamudha, Purnamidam, Purnat, Purnamudichyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vasishyate. That is the dream of a Viksit Bharat. Paripurna Bharat, with all religions, all castes, all genders, people from all backward communities, tribal, SCs, everyone holding hand to hand and making Mother India strong, so that we can once again show the world the strength of our civilization. That is the dream of Vikashit Bharat, or Viksit Bharat as we call it. That is a very and even that's why Modi ji always says sabka saath, sabka vikas, sabka prayas, sabka vishwas. The word sab is common, because it is inclusiveness. The inclusiveness, that is to stress on the inclusiveness, he says sub, so that no one is left out in our pursuit for excellence. Absolutely. On that very sanguine note, Honorable Governor, thank you so much for joining us on Sunset TV. Thank you. Thank you. Honorable members, on 26th March 2025, I received a communication, notice of question of privilege against Sri Amit Shah, Minister of Home Affairs, from Sri Jairam Ramesh, Chief Whip, Indian National Congress. While pending his signatures, Sri Jairam has signed as 26th of May. This is something which can be overlooked, as does not change the context. This notice has been given by Sri Jairam Ramesh under Rule 188 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States Rajya Sabha against Sri Amit Shah, Minister of Home Affairs. And his assertion is that aspersions have been cast on Srimati Sonia Gandhi, member of Rajya Sabha and chairperson of Congress Parliamentary Party. Sri Jairam Ramesh has in particular indicated that on 25th March 2025, Sri Amit Shah, Minister of Home Affairs, while replying to the debate on the Disaster Management Bill 2024, had inter alia stated as follows, I quote, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष कांग्रेस शासन में बना और पीएम केयर्स नरेंद्र मोदी जी के शासन में बना। एनडीए के शासन में, कांग्रेस के शासन में एक परिवार का ही नियंत्रण होता था। मान्यवर इसके अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष सदस्य होते थे, मान्यवर। He further goes on to quote, and I quote, कांग्रेस के अध्यक्ष, सरकारी फंड में कांग्रेस के अध्यक्ष क्या जवाब, प्लीज, nothing will go on record. No, please, nothing will go on record. This is a serious matter, and I have very frequently noticed that with respect to breach of privilege notices, which I'll come a little later, we need to evolve a protocol. I'll come to that a little later. कांग्रेस के अध्यक्ष, सरकारी फंड में कांग्रेस के अध्यक्ष, क्या जवाब दोगे देश की जनता को? ऐसा मानते हैं, कोई पढ़ता नहीं, देखता नहीं. Honorable members, thereafter, some members took exception, and the Honorable Home Minister announced he will authenticate his statement. Shri Jairam Ramesh, after indicating this, has requested that in view of the foregoing, privilege proceedings may be initiated against Shri Amit Shah, Union Home Minister.
Honorable members, this has found wide traction in media. If a communication is sent to the chair, as has been indicated in the bulletin, and a long-standing practice, it should not get publicity. Ultimately, the chairman or the house has to take a call. But the traction has been very widespread. I have taken note of the authentication wherein Shri Amit Shah, Honorable Home Minister, has indicated, I quote, मैं राज्य सभा में दिनांक 25 मार्च 2025 को आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 की चर्चा के दौरान मेरे द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF पर की गई टिप्पणी को सत्यापित करते हुए भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 जनवरी 1948 को जारी प्रेस विज्ञप्ति को आपके समक्ष रखता हूं। Honorable members, he has authenticated a document which is January 24, 1948, Press Information Bureau, Government of India, Press Note, Prime Minister's National Relief Fund, Pandit Nehru's appeal. Pandit Nehru has issued the following appeal. I am focusing, honorable members, the relevant part, it will be available to you. I am therefore starting a fund called, quote, the Prime Minister's National Relief Fund, unquote, and I invite donations to this fund. And then the constitution of the fund is given. It will be managed by a committee consisting of, number 1, the Prime Minister, number 2, the President of the Indian National Congress, the Deputy Prime Minister, and there are some other members. Honorable members, I have carefully gone through the debate and what the Union Home Minister asserted. Home Minister focused in categorical terms that this was the practice. Sir, this is too clever by half. Honorable members, I'm coming to that. I'm coming to that. Nothing will go on record. Nothing will go on record. No, nothing will go on record. Nothing. Honorable members, let me reflect. I have carefully gone through it. I find there has been no transgression. There has been absolute adherence to truth, which is vindicated by a document that is available to the honorable members. And that being the situation, I cannot persuade myself to accord any acceptance to this notice of question of privilege against Shri Amit Shah, Minister of Home Affairs. जागू मैं सारी रहना सगन बनबो। भारत का मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत लगातार बड़े बदलाव का गवाह बन रहा है। इस बदलाव में वेव्स भी एक अहम भूमिका निभा रहा है।
इस भव्य मंच पर युवा प्रतिभाओं के लिए गायन प्रतियोगिता वाह उस्ताद एक बेहतरीन अवसर के रूप में उभरी है। उत्साह से लबरेज प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। वाह उस्ताद एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आगे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। I am very happy and thank you waves. बहुत कुछ सीखेंगे और एक एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। We are extremely honored and grateful and thankful to Doordarshan, Ministry of Information and Broadcasting for bringing out an initiative like Waves and also for making us the Gharana part of it. इन लोगों का सफर यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद चुने हुए प्रतिभागी संगीत जगत में अपना लोहा मनवाने के लिए अगले राउंड में हिस्सा लेंगे। वाह उस्ताद जैसी पहल के साथ वेव्स केवल एक समिट नहीं है, बल्कि ये विभिन्न प्रतिभाओं के लिए एक लॉन्च पैड है जो देश के युवाओं को एक वैश्विक मंच दे रहा है। इस तरह की पहलों के साथ मनोरंजन जगत का भविष्य बेहद सुनहरा नजर आ रहा है। सिद्धार्थ भारद्वाज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दुनिया का सबसे ऊंचा हिमालयन डेजर्ट और 14,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर बहती ये कल नेचुरल झील यानी प्राकृतिक झील, इसे पैंगोंग झील भी कहते हैं। ये नजारा, ये खूबसूरती लद्दाख की है। आपको बता दें कि इस प्रदेश की आबादी महज 2.5 लाख है, लेकिन सीजन के समय यहाँ पर 5 लाख से भी ज्यादा सैलानी आते हैं जो देश विदेश से यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की ओर खिंचे चले आते हैं। आइए जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में क्या कुछ परिवर्तन आया, कितने हुए यहाँ विकास के काम। आइए सिर्फ शहर नहीं, गांव-गांव चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है यहाँ पर हुए परिवर्तन के बारे में। हर तरफ शांति का एहसास, सादा जीवन और प्रकृति की गोद में बसावट, कुछ यही है लद्दाख का जीवन। परिवर्तन की इस कड़ी में हम आ पहुंचे हैं दास पेमा चोगलामसर। एक छोटा सा गांव है। बड़ा गांव चोगलामसर है और चोगलामसर से ऊपर बसा है दास पेमा चोगलामसर। परिवर्तन की इस कड़ी में आज हम जानेंगे कितना बदलाव हुआ इस गांव में और क्या सचमुच विकास इस गांव तक पहुंचा या नहीं। आइए लोगों की जुबानी जानते हैं यहाँ पर आई परिवर्तन की कहानी। इस जगह पे मैं 2005 में मैं आया था, 6 से यहाँ पे रहना शुरू हो गया था। तो उस समय हमारे यहाँ पे 2-3 ही घर था यहाँ पे। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे लोग आना शुरू हो गया, तो यहाँ घर बनाना शुरू हो गया। तो हमारा यहाँ पे एक बहुत बड़ा 170-80 के करीब यहाँ पे घर बसा हुआ है। पहले हमें यहाँ पे पानी का सुविधा इतना अच्छा नहीं था। टैंकरों में पानी लाता था, टैंकर में कभी आता था कभी नहीं आता था। तो ऐसे करते करते अभी आगे बढ़ के तो उसके बाद हमें जल जीवन का ये जो एक मशीन आया, तो उसके तहत हमें पानी मिलना शुरू हो गया घर घर में। परिवर्तन के इस सफर में हम लद्दाख के गांव-गांव तक गए। हमने कई लोगों से बातचीत भी की। लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला यहाँ सबसे बड़ी समस्या जल की ही थी। नुब्रा में बहुत बड़ा गांव है आबादी के लिहाज से। यहाँ पर पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था। जो गीलैंड रखा हुआ है उनमें जाकर के लोग पानी ढो करके लाता है।
पानी लेने जाना, पहले तो फिर पानी लाओ, फिर बच्चों को स्कूल डालना, कितना मुश्किल पड़ते थे। ठंडी के मौसम में तो पूरा पानी भी जम जाता है, फिर वो आइस तोड़ना पड़ता था हमें यहाँ। हर घर जल पहुंचे, ये लक्ष्य काफी कठिन था, पर उम्मीदों का हौसला बुलंद था और हर घर नल पहुंचने की योजना जोरों पर थी। लेकिन चुनौती बर्फ की चादर को भेदना था। ऐसे में इंसुलेटेड पाइप्स, जन भागीदारी और सरकार के प्रयासों से लद्दाख में गांव-गांव और सुदूर गांव में भी हर घर जल लाकर एक नया इतिहास रचा गया। यूं तो पहाड़ प्रकृति के सबसे करीब होते हैं और यहाँ पर साफ पानी का सबसे बड़ा स्रोत भी होता है। लेकिन जब बात लद्दाख की हो और वो भी शून्य से नीचे वाले तापमान के स्थान की, तो जल एक बड़ी समस्या भी थी, जहाँ पर जल जीवन मिशन ने हर घर तक नल की पाइप को पहुंचाया और दूर दूर से पानी लाने वाले लोगों को राहत भी प्रदान की। अभी तो इतना अच्छा है, इतना देखो ना, घर के सामने पानी आए, दूर दूर से लाते थे पानी। पहले यहाँ पे नहीं था ना, पहले बहुत प्रॉब्लम होते थे घर में ना। बहुत अच्छा हो गया, अभी तो हमें टाइम भी मिल रहा है, बच्चों को टाइम से स्कूल में डालो, घर घर में पानी पहुँच गया, हमें बहुत खुशी हो गया। जो सर्दियों का मौसम है वो कड़क ठंड होता है, पानी लेके आना फिर उसको जमा करके रखना ये बहुत मुश्किल होता था। जब जल जीवन सामने आया है, एक तो वो जमने का कोई डर नहीं रहता है, आसानी से पानी पहुंच जाता है घर घर में, और हमें एक समय भी मिलता है अपने लिए, अपने परिवार को के लिए। एक आसान जिंदगी हो चुकी है एक तरफ से पानी की समस्याओं से। जिंदगी बहुत अच्छी से बदल गया, लोगों का, महिलाओं का सबसे ज्यादा टाइम निकल गया, तुरंत अपने घर के सामने पानी आ गया। जो भी हो टाइम, उस टाइम को दूसरा जगह में टाइम यूज कर सकते, इसलिए बहुत सब गाँव वाले खुश हैं। सर्दियों की तो छोड़िए, ये वो स्थान है जहां पर गर्मियों में भी सर्दियों का एहसास होता है। ऐसे में स्टॉक, नांग और फियांग गांव की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर लोगों को सर्दियों में पेयजल की दरकार भी थी। ऐसे में एक नदी से कुएं में पानी को जमा कर दिया गया, जहां पर पाइपलाइन की व्यवस्था से और पंप लगाकर हर घर जल पहुंचाने की व्यवस्था की गई, ताकि सर्दियों में भी पानी ना जमे और हर घर तक जल मिल सके। इसके लिए स्पेशल तरीके की पाइपों का इस्तेमाल भी किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर गैलरी एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये वाटर सप्लाई का एक पार्ट है। ये ऐसी जगह पर लगता है जहाँ पर पानी साफ नहीं आता हो। इससे ये फायदा हुआ कि गर्मियों में यहाँ पर मिट्टी वाला पानी आता है, वो पीने लायक नहीं होता है, तो इसके थ्रू हमें फिल्टर वाटर मिलता है। तो ये 24/7 वाटर सप्लाई है। इस व्यवस्था से न केवल हर घर में जल पहुंचा, बल्कि उसके साथ ही जल संरक्षण को भी बढ़ावा दिया गया, ताकि हर घर सिर्फ नल ना हो, उसमें जल भी हो। हर घर जल जब पहुंचता है तो सबसे अधिक लाभ हमारी बहनों को होता है, भावी पीढ़ी को होता है। कुपोषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई मजबूत होती है। नमस्ते जूले। जूले जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। अच्छा ये बताइए कि आप, हमें पता चला कि यहाँ पहले पानी नहीं आता था बिल्कुल। हाँ जी। तो टैंकर से पानी भरते थे। हाँ जी। लेकिन अब तो नल का सबके घर में लग गया। हाँ जी। तो अब कितनी सहूलियत हो गई। बहुत अच्छा हो गया। माइनस टेम्परेचर हो जाता है। हाँ जी। तो पानी जम जाता है। पानी आता है फिर भी आता है मैम। जमता नहीं। नहीं, हर एक घर में आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब पानी आने से तो अच्छी सुविधा हो गई। हाँ जी। लेकिन बिजली का क्या है, बिजली होती है? हाँ जी, होती है बिजली भी। पहले जब पानी नहीं था, हमें हफ्ते में सिर्फ दो बार ही टैंकर आते थे। जब पानी खत्म हो जाते थे तब हम अपना गाड़ी लेके मतलब दूर दूर जाना पड़ते थे। फिर अभी जब जो जल जीवन का पानी आया, तब से हमें मतलब बिना सर्दियों में भी बिना जमे हुए पानी आते।
मेरे को यूटी आने के बाद बहुत खुशी हुई। मतलब इतना डेवलप आते हुए देख रहा है हर जगह, और जहाँ जहाँ पे नेटवर्क नहीं थे वहाँ पे अभी नेटवर्क आ रहा है, जहाँ जहाँ पे सड़क नहीं थे वहाँ पे अभी सड़क आ रहा है, जहाँ जहाँ पे पानी नहीं थे अभी वो सब आ रहे हैं। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां और बीच में वैली में बसा है आदर्श ग्राम समूह। साबू गांव में हुए परिवर्तन पर बात करने आए हैं कि यहाँ हाल ही में कुछ बदलाव हुआ, या फिर अगर हम ये कहें कि लद्दाख यूटी बन गया, यूटी बनने के बाद कुछ बड़ा बदलाव अगर आपके यहाँ हुआ तो आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? जी, यूटी बनने के बाद तो हमारे यहाँ पे घर घर में नल लगे हुए हैं। जैसे पहले रिवर से हम लाते थे पानी, विंटर्स में बहुत तकलीफ होती थी, चल के जाना पड़ता था, लेकिन अभी विंटर्स में लाइक 24 आवर्स ये नल से हमें पानी आता है, और विंटर्स के महीने में भी हमें पानी आता रहता है। जी, ड्रास्टिकली जो है चेंजेस यहाँ पे आया है, और जो 70 साल में जो यहाँ पे 70 साल में जो बुनियादी सहूलियत के जो चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध नहीं होता था, उन चीज़ों को कम समय में हमने यहाँ पे उपलब्ध किया है। ऐसा कोई रिमोट एरिया नहीं है जहाँ पे अभी रोड एक्सेसिबिलिटी का काम नहीं चल रहा है। बहुत सारे जगह ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है, बहुत सारे जगहों पे अभी काम चल रहा है। टेलीकम्युनिकेशन के दृष्टि से भी देखेगा तो जहाँ 2 परिवार है, दुर्गम क्षेत्र में है, पहुंचना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे भी मोबाइल टावर अप्रूवल हो चुका है। देमजोक जैसे जो जीरो बॉर्डर है, जिसको हम कहते हैं जीरो बॉर्डर, बिल्कुल आप चाइना उस साइड आप बिल्कुल अपने आंखों से देख सकते हैं। देमजोक में भी हमने 70 ईयर्स के बाद देमजोक के लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल करते हुए वहाँ पे हमने मोबाइल टावर लगवा दिया है। वहाँ पे हर घर में नल से जल दिया जा रहा है, वो भी हमने किया है। रोड सड़कें बन रहा है, बिल्कुल डबल लेन चुशुल से लेके देमजोक तक बिल्कुल ब्लैक टॉप, इतना बढ़िया रोड का काम अभी शुरू होके वहाँ पे काम चल रहा है। कम्युनिटी उनके गैदरिंग करने के लिए कम्युनिटी हॉल बना के दिया है। उनके हेल्थ को देखभाल करने के लिए वहाँ के मेडिकल सब सेंटर हमने बनवा के दिया है। जब 370 हटा और ये ड्रीम कम ट्रू है, उसके बाद हमारे पास फंड्स बहुत आते हैं, 6,000 करोड़ रुपए मिलते हैं, हम अपने LAHDC को दे देते हैं। मैं हर एक सरपंच से पूछता हूं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो हमारा यहाँ पर विकास का हर क्षेत्र में काम चल रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सिंघल है। मैं ग्राम पंचायत साबू का सरपंच हूँ। यहाँ इस गांव का आबादी है लगभग 1,500 के करीब है। तो ये गांव ले से ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा नज़दीक कोई 5-6 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लोग को जमीन में भी छोटा मोटा करते हैं, सब्जी वगैरह उगाते हैं, और यहाँ छोटे मोटे मुलाजिम भी करते हैं लोग। तो यहाँ केंद्र शासन बनने के बाद तरक्की तो बहुत अच्छा हुआ है। ये जल जीवन का काम है ना, यहाँ जोर जोर से हो रहा है हर गांव में। स्कूल भी वहाँ है। यहाँ ये हमारे नीचे एक स्कूल है, ये कॉन्सेंट मॉडल स्कूल बना है, वहाँ बहुत अच्छा से चल रहा है। इससे पहले लास्ट ईयर इसका था कोई 50 साल की, अभी 100 से ऊपर हो रहा है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, ज्यादा हमारे लड़के हैं, वुमेन है ना, मेरे से भी ज्यादा शिक्षा में वो ऊपर जा रहे हैं, कर रहे हैं। हम तो कोशिश करते हैं। हमारे जो एजुकेशन कमेटी यहाँ बना हुआ है, वो विलेज एजुकेशन कमेटी है, वो भी एजुकेशन के बारे में वो खुद काम करते हैं। प्रधानमंत्री जिस तरह वो बोलते हैं मन की बात में, या जिस तरह भी प्रधानमंत्री लद्दाख के लिए जो अच्छे सोचते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी अभी तक हुआ है, अच्छा तरक्की हुआ है हर जगह से। प्रधानमंत्री जिस तरह कैसे हो रहा है और होता रहेगा, तो आगे भी हम उम्मीद करेंगे होता रहेंगे। यहाँ का एक एस्पिरेशन भी था कि हम लोग एक यूटी बने एंड हम लोग थोड़े से एम्पावर्ड हो जाएं।
तो दैट इज वन ऑफ द बेसिक एस्पिरेशंस दैट हैज बीन मेट आफ्टर बिकमिंग अ यूटी। बिसाइड्स दैट डेवलपमेंट में बहुत काम हो रहा है, जैसे अर्बन डेवलपमेंट में भी अगर हम देखें तो हम बिल्डिंग बायलॉज बना रहे हैं, मॉडल बिल्डिंग बायलॉज बना रहे हैं जो सूटेबल होगा यहाँ के लिए। मास्टर प्लान्स की तैयारी हो रही है बोथ फॉर लेह एंड कारगिल, ताकि हम एक ढांचा बना पाए जिसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर सेटअप हो जिससे रन कर पाए हमारा यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट। बिसाइड्स दैट हमने लेगेसी वेस्ट जो है हमारा लेह और कारगिल में दोनों का क्लीनिंग अप शुरू कर दिया है। हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान हमारा लेह का चल रहा है, कारगिल में हमारा सेटअप हो रहा है। हम सॉलिड STPs बनाने वाले हैं, हमारा DPRs रेडी हो गए हैं कारगिल के लिए और लेह के लिए। एंड 24/7 वाटर सप्लाई पे हमारा काम चल रहा है, उनके भी DPRs रेडी हो रहे हैं। सो जितना भी एक किसी जो सिटी अर्बनाइज हो रहा है या टाउन अर्बनाइज हो रहा है, उसमें जो भी मूल सुविधाएं इंपॉर्टेंट हैं उन सबको मुहैया कराने के लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। अगर मैं इंडस्ट्रीज कॉमर्स की बात करूं तो हमने स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना दी है, जनवरी में नोटिफाई कर दी है। उसकी भी गाइडलाइंस बन रही हैं ताकि उसका भी जो यहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं बेनिफिट उठा पाए। एक सेंट्रल सेक्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी है जो शीघ्र ही जो है भारत सरकार में पारित होने की संभावना है। तो ऑन वेरियस फ्रंट जो है काम चल रहा है। अगर आप कहें हम PM स्वनिधि एक बड़ी अच्छी स्कीम है जो यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हुई है फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्ट्रीट वेंडर्स, इन सबको भी जो है जो फैसिलिटीज मिल सकती हैं जो फॉर अ स्मॉल वेंडर, उन सब के ऊपर भी बहुत काम चल रहा है। PM आवास योजना के अंदर हमारे घर जो है लेह और कारगिल में ऑलमोस्ट हमारे काम कंप्लीट होने वाले हैं। हमें लगता है इस वर्किंग सीजन में या नेक्स्ट ईयर, मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर तक वो सबके घर पूरे बन जाएंगे। परिवर्तन अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों का एस्पिरेशन जो है मीट हुआ है ऑफ फीलिंग एम्पावर्ड and that being in control of their own budget and everything and जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट में तो इट्स वेरी अपरेंट कि हर जगह आपको इतना डेवलपमेंट हर चीज में दिख रहा है एंड लोगों की एक वॉइस जो है इट हैज फाउंड इट्स utterance I would say in whatever work is going on। सड़कों की श्रृंखलाएं बढ़ गई, सब जगह पे डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हुआ। दूसरा, अवेयरनेस बढ़ गई। परिवर्तन ये हुआ, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई कि हम यूटी के पार्ट हैं और हमारे ये राइट्स हैं जो इन्हें पहले महसूस ही नहीं हुआ था जब ये जम्मू कश्मीर के साथ में थे। परिवर्तन की सीरीज में हम पहुंच गए हैं समुद्र तल से 17,688 फीट की ऊंचाई पर। यह है चांगला दर्रा, जिसे वर्ल्ड 10th हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी कहते हैं। बर्फ से ढके चांगला दर्रे का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर बढ़ना, जैसा कि चांग शब्द का अर्थ है दक्षिण। चांगला पास की वर्तमान में देखभाल और इसका संरक्षण भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है। क्योंकि ये दर्रा चीनी सीमा के करीब है, इसलिए भारतीय सेना को इस दर्रे की देखभाल करने की जरूरत है। जो भी इस दर्रे पर जाता है, भारतीय सेना उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है। देश की रक्षा में हर मौसम को भूल हर सैनिक तत्परता के साथ देश सेवा में समर्पित है। यही जज्बा है हर फौजी जवान का और यहाँ से हर जवान एक ही बात कहता है, जय हिंद। करीबन 17,000 फीट की ऊंचाई है समुद्र तल से और हमारे साथ हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के वो तमाम कारीगर जो यहाँ पर सड़क का निर्माण करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या चुनौतियां हैं यहाँ पर सड़क बनाने में। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहन मुर्मू। मोहन मुर्मू जी, कहाँ से आते हैं आप? झारखंड से आते हैं सर। बहुत बढ़िया, झंस्कार से आते हैं। ये बताइए, यहाँ जो आप सड़क बनाते हैं, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, इतनी ठंड है, डर नहीं लगता? डर लगता है सर, बॉर्डर का बगल में काम करते हैं रोड में। हाँ। इतना ठंडा लगता है, ऑक्सीजन में कम है। अच्छा ये बताइए, इतनी ऊंचाई पर आप काम कर रहे हैं देश के लिए, कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। कुछ देश के लिए कहना चाहेंगे, अपने देश के लिए? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग वही सवाल कर रहे हैं कि पब्लिक जितना जाना आना में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम लोग झारखंड से यहाँ बनाने के लिए हम लोग आते हैं। हर साल आते हैं, हर साल हम लोग बनाते हैं। पुल है, ये दीवार है, रोड है, ताकि पब्लिक को सहूलियत हो। हाँ, और अच्छे से सड़क बन सके। हाँ। देखिए इनका जज्बा, इतनी सर्दी है,
इतनी ठिठुरन हो रही है, सांसें फूल रही हैं, लेकिन एक इनका जज्बा है कि ये देश के कोने कोने से यहाँ आए हैं अपनी सेवा देने के लिए, सड़क का निर्माण करने के लिए, ताकि हम विकास की ओर बढ़ सके और आम पब्लिक हर ऊंचाई तक पहुंच सके और हम यहाँ से कह सके कि हमारे देश के हर कोने में परिवर्तन आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जज्बे को सलाम। जय हिंद। जय हिंद। जीरो डिग्री टेम्परेचर यहाँ आम बात है। माइनस टेम्परेचर में यहाँ लोगों को रहने की आदत है। तेज धूप है लेकिन सर्द हवाएं चल रही हैं। ये लद्दाख है। परिवर्तन की सीरीज में हम लद्दाख के गांव-गांव जा रहे हैं और इसी कड़ी में हम एक गांव में पहुंचे हैं जहां हमारे साथ लद्दाख का एक युवा शामिल है। आइए इनसे बात करते हैं। जूले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिगमेत है। जिगमेत, क्या करते हैं आप? मैं टैक्सी चलाता हूँ, टैक्सी ड्राइवर है। तो ये बताइए कि आप लद्दाख के ही हैं या आप बाहर से आए हैं? हम लद्दाख के हैं। लद्दाख के हैं। तो ये बताइए, क्योंकि आप लद्दाख के हैं तो आपने बचपन से लद्दाख को देखा होगा। आप ये भी जानते होंगे कि लद्दाख अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ जी। तो ये बताइए, केंद्रीय शासित प्रदेश बनने के बाद क्या लद्दाख में आप कुछ परिवर्तन देखते हैं? हाँ मैम। क्या परिवर्तन हुआ? थोड़ा वही रोड का समय, नेटवर्क, जो घर घर में पानी, ये तो थोड़ा चेंजिंग हुआ है, बताया। अच्छा ये बताइए, आप टैक्सी ड्राइवर हैं, आप पहले भी टैक्सी चलाते होंगे, आज भी टैक्सी चलाते हैं, तो कई लोगों को आप, कई टूरिस्ट को आप जगह जगह घुमाने लेकर जाते होंगे। तो एक तो टूरिस्ट आज यहाँ आने के बाद किस तरह की बात करते हैं? क्या उन्हें यहाँ कर अच्छा लगता है, कुछ बदलाव दिखता है? और आप क्योंकि टैक्सी चलाते हैं तो आपको सड़कों पे कुछ बदलाव नजर आता है? हाँ मैम, वही टूरिस्ट लोग पहले तो बहुत रास्ता खराब था यहाँ पे, पेंगोंग आने में भी, नुब्रा जाने में भी। वो तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो गया है, थोड़ा अच्छा हुआ है, रोड पूरा बन गया है। पहले टूरिस्ट यहाँ आ भी नहीं सकते थे और रोड थोड़ा खराब था ना, इसलिए अभी तो ठीक हुआ है। अभी रोड बहुत अच्छा बन गया है यहाँ पेंगोंग के लिए, वन डे भी जा सकते हैं। पैंगोंग झील से करीबन 13 किलोमीटर दूर ये है फोबरान गांव और फोबरान गांव के सरपंच सोनम वांगचुक है। इस वक्त हमारे साथ उन्हीं की धर्मपत्नी डोलसी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जूले, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, हम आपके गांव में आए हैं, हम ये जानने आए हैं कि पूरे लद्दाख में कितना बदलाव हुआ। अगर हम आपके गांव की बात करें, आपके पति सरपंच हैं, आपके गांव में क्या कुछ सालों में, अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश बनने की बात करूं, लद्दाख के अलग होने की बात करूं, तो क्या कुछ अच्छा काम हुआ, कुछ बदलाव हुआ? हाँ जी हुआ। क्या हुआ? और हमारे रोड बन गया, वो घर घर पानी आ गया, फिर बिजली भी है यहाँ, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम। पूरे फोबरान गांव की अगर मैं बात करूं तो उसकी आबादी कितनी है, कितने लोग रहते हैं लगभग? है 110-20 लोग रहते हैं। तो 110-20 लोगों के लिए क्या पूरा गांव तक घूमने के लिए, यहाँ से जाने के लिए, यहाँ से ले जाने के लिए, किसी और गांव जाने के लिए पूरी सड़क बनी हुई है पक्की? तो ये पहले सड़क थी कि नहीं थी? पहले तो नहीं थे, पहले तो नहीं थे कुछ नहीं। जिंदगी में एक टाइम आता है कि जब थोड़ा सा आप चाहते हो कि नेचर के आसपास हो, उसके लिए हमने लेह लद्दाख को चुना और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देख के कि जब से ये यूनियन टेरिटरी बना उसके बाद से डेवलपमेंट तो चारों तरफ दिख रहा है। चाहे वो रोड्स की ले लीजिए, चाहे बाकी जो सुविधाएं हैं जो स्पेशली फॉर द टूरिस्ट, एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो जानकारी है कि यहाँ पे जितने लोग रहते हैं, जो रेसिडेंट हैं, उनसे ज़्यादा हम लोग टूरिस्ट आ जाते हैं। तो नेचुरली इतनी बड़ी भीड़ को हैंडल करना सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती थी, बट वो मुझे दिख नहीं रहा है। मतलब इट इज़ क्वाइट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है और हम बहुत खुश हैं इस मामले में। हम देखिए इतनी दूर पैंगोंग लेक में आए हुए हैं, यहाँ पे भी सारा फैसिलिटी लगभग हमें मिल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिमाग में एक इमेजिनेशन था कि पता नहीं रोड कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। जो हम लोग को जो अनुभव था, जो लोगों ने बताया था कि रोड बहुत ख़राब है, आप लोग इतनी एज में कैसे जा रहे हो,
हाँ, आप लोग की एज काफ़ी हो गई है और ऐसे खराब रास्ते पे आप लोग कैसे जाओगे? लेकिन यहाँ आके जस्ट ऑपोज़िट हमने देखा। रोड तो केवल मतलब मक्खन की तरह सारे रोड्स हैं और लेह से हम यहाँ तक आए, मतलब हमें पता ही नहीं लगा, इतनी स्मूथली और इतना डेवलपमेंट हो रखा है और जहाँ थोड़ा बहुत मतलब बचा हुआ है उसमें अभी काम चल रहा है और आगे भविष्य में मैं आशा करती हूँ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो तब तक वो भी काम पूरा हो चुका होगा। अभी जो रोड्स हमें मिले हैं वो शायद ऐसे नहीं थे कुछ सालों पहले, एंड वो डेवलपमेंट तो बिल्कुल दिख रही है। हम लोग अभी थांग गए थे और हम लोग बहुत रात में लौटे, एंड इट्स अ वेरी सेक्लूडेड एरिया, बट हर थोड़े टाइम बाद आर्मी पोस्ट थी। तो ये था कि अगर कुछ गाड़ी को हो जाए या कुछ भी हमें हो जाए तो हमें वो सपोर्ट मिल जाएगी। एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि आई डोंट थिंक वी हैव अ डेजर्ट माउंटेनियस एरिया एनीवेयर एल्स एज सच। कोई भी और हिली एरिया जाए, कहीं भी जाए, दे आर ऑल filled with plants, trees, and they're green. This is a very different and unique sort of beauty, which I don't think any other place can give, which is very fantastic to me, because I've not seen that. I've been to other places, other hilly areas. I come from Northeast basically, but this is very unique. तो लद्दाख में पैंगोंग लेक के बिल्कुल किनारे इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्रैवलर्स ने, बहुत सारे टूरिस्ट ने बात की, बहुत सारे बाइकर्स ने बात की और अभी मैं आपसे जिनकी मुलाकात करवाने वाली हूँ वो ऑस्ट्रेलिया की डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं, वीडियो जर्नलिस्ट हैं। आइए उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्हें कितना अच्छा लग रहा है, कितना अलग लग रहा है लद्दाख विजिट करके। You can compare India to anywhere in the world. I've traveled a lot, and coming here, I found that there's been a lot of development on the roads as you travel here. I mean, it's a very remote place in India, so I think that the area is doing a really good job. I hope they keep it as pristine as it is, because we as tourists want to see nature. We don't want to see rubbish. We want people to take care of the beauty that each country, especially India, it's so diverse in not just scenery, but people and colors and beautiful people, all sorts of different. It's almost like lots of cultures coming together. कुशुक बाकुला रिनपोचे एयरपोर्ट ले, जी हाँ, एक कनेक्टिविटी का माध्यम ये भी है। लद्दाख यूटी बनने के बाद इसी का एक नतीजा है कि हम एक नई बिल्डिंग के साथ वी आर कमिंग अप। एक नई बिल्डिंग, भव्य, अपने आप में खूबसूरत, नई सुविधाओं के साथ, पूरे यूटी के लिए नई सुविधाओं के साथ ये अवेलेबल रहेगी और अच्छे तरीके से जो टूरिस्ट हमारे आते हैं, जिनको अभी छोटी बिल्डिंग कंजस्टेड लगती है, वो सुविधाओं का पूरा लाभ या फायदा उठा पाएंगे। जैसे ही सर्दियां आएंगी, एक्सट्रीम वेदर आएगा, यही एक माध्यम है। ले कनेक्टिविटी बाय एयर ही रहती है उस वक्त। इनिशियली जो हम लोग को फीडबैक था बिफोर लद्दाख बिकमिंग यूटी, तो इट वाज अ स्ट्रगल कमिंग टू ले एंड लद्दाख। रोड्स नहीं है, ऑफ रोडिंग ज्यादा है, इट वाज एन एक्सपीरियंस अलग था वो। लेकिन अभी रिसेंटली रोड्स आर सो गुड, एंड हम लोग की जो बाइक्स है दोज आर नॉट इनटू मच ऑफ ऑफ रोडिंग। इससे इट सेव्स मच ऑफ द टाइम, हम लोग ब्यूटी को ज्यादा निहार सकते हैं बिकॉज ऑफ गुड रोड्स। सो यहाँ पे डेवलपमेंट तो हम लोगों को दिखा है। हम लोग को जहां जहां हम लोग गए हैं, रोड्स आर गुड। I always wanted to like कि maybe America या UK जाके कुछ ऐसे roads explore कर पाएंगे, but it's like such a fascinating thing to have such lovely roads here. हम हैं इस वक्त लद्दाख में और आप देख रहे हैं Honorable members, I need to indicate to the House that we yesterday had
a very fruitful interaction on the issue that is agitating minds of the public. There was gracious presence of leaders of political parties, including leader of the House and leader of the opposition. Without going into the details, the deliberations were consensual, reflecting cooperation, concern, and the issue is not between institutions inter se. It is not that executive, legislature, or judiciary are pitted against each other. All the institutions in the country have to function in tandem, in togetherness, and also there are checks and balances which are well meant. It has been given by both leader of the House and leader of the opposition that after having wider consultations amongst all concerned in their respective parties and otherwise, they would come to the chairman for further deliberations. That was the conclusion after both leader of the House and leader of the opposition had shared their thoughts along with others. स्वागत है आपका प्रश्नकाल में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है लोकसभा से। ये सवाल जुड़ा है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल ने। उन्होंने विद्युत मंत्रालय से पूछा कि RDSS यानी संशोधित वितरण क्षेत्र योजना और इसकी प्रगति दर का ब्यौरा क्या है। RDSS के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य के लिए बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचलनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम शुरू की। स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपए है और केंद्र सरकार से अनुमानित सकल बजटीय सहायता 97,631 करोड़ रुपए है। इस स्कीम का उद्देश्य स्कीम अवधि के अंत तक समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को अखिल भारतीय स्तर पर 12 से 15% कम करना और आपूर्ति की औसत लागत और औसत प्राप्त राजस्व के बीच के अंतर को शून्य करना है। इस स्कीम के दो प्रमुख घटक हैं। भाग क प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग और वितरण अवसंरचना का उन्नयन। भाग ख प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और अन्य सक्षमकारी गतिविधियां। इस स्कीम के अंतर्गत वितरण कंपनियों को हानि न्यूनीकरण, अवसंरचनात्मक कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। हानि न्यूनीकरण अवसंरचना के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1,31,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है, जिससे देश में विद्युत की आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। इस स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत हानि न्यूनीकरण परियोजनाओं में अनावृत कंडक्टरों को आवृत कंडक्टरों से बदलना, लो टेंशन एरियल बंच्ड केबल बिछाना, वितरण ट्रांसफार्मर, उप स्टेशनों का उन्नयन, संवर्धन, फीडर पृथक्करण कार्य आदि शामिल है।
संस्वीकृत कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है और हानि न्यूनीकरण कार्यों की अब तक की वास्तविक प्रगति 24% है। इसके अलावा उन्नत मीटरिंग अवसंरचना के हिस्से के रूप में 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं, 2.11 लाख फीडरों और 52.53 लाख वितरण ट्रांसफार्मर्स के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। आरडीएसएस के अंतर्गत 26,485 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत विद्युत विकास स्कीम और प्रधानमंत्री विकास पैकेज की सम्मिलित स्कीमों के तहत खर्च की गई निधि शामिल है। इसके अलावा भारत सरकार आरडीएसएस के अंतर्गत सौभाग्य अवधि के दौरान छूटे हुए सभी घरों के विद्युतीकरण का सहयोग कर रही है। जहां भी व्यवहार्य पाया गया, आरडीएसएस के अंतर्गत ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। इसमें सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों, पीएम जनमन के अंतर्गत चिन्हित किए गए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित घरों और डीएजेजीयूए के अंतर्गत चिन्हित किए गए अनुसूचित जनजातियों से संबंधित घरों का ग्रिड विद्युतीकरण शामिल है। स्कीम के अंतर्गत निधि जारी करना यूटिलिटी के प्रचलनात्मक और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार पर निर्भर है, जिसने भारत सरकार द्वारा की गई अन्य पहलों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा यूटिलिटी को जारी की जाने वाली सब्सिडी और सरकारी विभाग के बकाया के भुगतान में अनुशासन लाने, टैरिफ आदेश को नियमित रूप से जारी करने, खातों को प्रकाशित करने, विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करने आदि में सहायता की है। केंद्र और राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर वितरण यूटिलिटी की कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां वित्त वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 26.28% हो गई है और एसीएस एआरआर अंतर वित्त वर्ष 2021 में 0.71 रुपए प्रति किलोवाट घंटा से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 0.19 रुपए प्रति किलोवाट घंटा हो गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सार्वजनिक निजी भागीदारी से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अनूप संजय धोत्रे ने। उन्होंने नागर विमानन मंत्रालय से पूछा कि सरकार क्षेत्रीय हवाई संपर्क पहलों को समर्थन देने के लिए किस प्रकार सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क पहलों को पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब दिया नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि आरसीएस उड़ान योजना के अंतर्गत निजी एयरलाइंस ऑपरेटर्स को वीजीएफ समर्थन और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी हवाई अड्डा प्रचालकों सहित हवाई अड्डा प्रचालकों द्वारा दी जाने वाली कई रियायतों के माध्यम से क्षेत्रीय और दूरस्थ संपर्कता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आरसीएस के लिए वीजीएफ का वित्त पोषण एयरलाइंस द्वारा कुछ घरेलू मार्गों पर लगाए गए शुल्क के माध्यम से किया जाता है। एयरलाइंस को अपने मार्गों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाए रखने में सहायता करने के उद्देश्य से सरकार ने आरसीएस उड़ान के तहत कई उपाय किए हैं, जैसे व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण, उड़ान मार्गों का परिचालन करने वाले चयनित एयरलाइंस प्रचालकों को व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण से परिचालन लागत और अर्जित राजस्व के बीच के अंतर को पूरा करने में मदद मिलती है। मार्ग विशिष्टता, अवार्ड किए गए आरसीएस मार्गों पर चयनित एयरलाइंस प्रचालकों को परिचालन की विशिष्टता। ईंधन का लाभ, आरसीएस हवाई अड्डों पर एसएओ द्वारा लिए गए एटीएफ पर 2% की दर से उत्पाद शुल्क और कम दरों पर वैट लगाया जाता है।
हवाई अड्डा शुल्क सब्सिडी। हवाई अड्डा प्रचालक लैंडिंग और पार्किंग शुल्क नहीं लगाएंगे। एएआई टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क में छूट देगा और आरसीएस उड़ानों पर सामान्य दरों के 42.50% की दर से रियायती आधार पर रूट नेविगेशन और सुविधा शुल्क लगाएगा। सेल्फ ग्राउंड हैंडलिंग। एसएओ को सभी हवाई अड्डों पर योजना के अंतर्गत परिचालन के लिए सेल्फ ग्राउंड हैंडलिंग की अनुमति दी गई है। आरसीएस ने क्षेत्रीय विमानन को आवश्यक प्रोत्साहन दिया है, जिससे संतुलित विकास को बढ़ावा के साथ साथ सामाजिक आर्थिक लाभ प्राप्त हुए हैं। दूर दराज और अल्प सेवित क्षेत्रों की संपर्कता में सुधार हुआ है। पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिला है। उड़ान योजना ने दूर दराज के क्षेत्रों के आर्थिक विकास को गति प्रदान की है और देश भर में आर्थिक गतिविधियों में अधिक न्याय संगत और समावेशी विकास में योगदान दिया है। इससे औद्योगिक केंद्रों, पर्यटन स्थलों और बेहतर संपर्कता के साथ व्यवसायों को बढ़ावा मिला है और व्यापार को अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। देश के 32 राज्यों में 2.97 लाख से अधिक आरसीएस उड़ानों में 149 लाख से अधिक घरेलू यात्रियों ने यात्रा की है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है बायो एटीएफ कार्यक्रम से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने। उन्होंने नागर विमानन मंत्रालय से पूछा कि वर्ष 2014 से अब तक कुल कितने ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों का निर्माण किया गया है। क्या सरकार ने विमानन क्षेत्र के डीकार्बनाइजेशन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बायो एटीएफ कार्यक्रम तैयार किया है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने बायो एविएशन टरबाइन ईंधन कार्यक्रम समिति का गठन किया है? यदि हाँ, तो समिति द्वारा किए जाने वाले कार्य सहित ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से 12 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों दुर्गापुर, शिरडी, कुन्नूर, पाक्योंग, कालाबुर्गी और वाकल, सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा, शिवमोगा और राजकोट का निर्माण और प्रचालन किया गया है। विमानन क्षेत्र के डीकार्बनाइजेशन के लक्ष्यों को साकार करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देश में बायो एटीएफ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बायो एविएशन टरबाइन ईंधन कार्यक्रम समिति का गठन किया था। समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ साथ कच्चे माल का उत्पादन, मांग, प्रौद्योगिकी, बीआईएस मानक, इंजन की निष्पादनता पर प्रभाव आदि शामिल थे। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों, देश में बनने वाले संधारणीय विमानन ईंधन संयंत्रों की क्षमताओं और अनुमानित एटीएफ बिक्री के आधार पर राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति द्वारा एटीएफ में एसएएफ के निम्नलिखित प्रारंभिक सांकेतिक मिश्रण प्रतिशत को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अनुमोदित किया गया है। 2027 तक 1% एसएएफ सांकेतिक मिश्रण लक्ष्य, 2028 तक 2% एसएएफ मिश्रण लक्ष्य और 2030 तक 5% एसएएफ मिश्रण लक्ष्य। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अप्पल नायडू कलिसेट्टी ने। उन्होंने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से पूछा कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन की वर्तमान स्थिति और देश भर में इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में कार्यान्वयन संबंधी ब्यौरा क्या है। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एनयूडीएम के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है। शहरी सेवा प्रदायगी में वृद्धि करने के लिए एनयूडीएम के अंतर्गत विकसित प्रमुख डिजिटल गवर्नेंस पहल और अवसंरचना कौन सी है। क्या सरकार ने दक्षता, पारदर्शिता और नागरिक सेवाओं के संदर्भ में शहरी स्थानीय निकायों पर एनयूडीएम के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। सरकार द्वारा एनयूडीएम को स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत जैसे अन्य शहरी मिशनों के साथ एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं।
इस पहल हेतु भविष्य में विस्तार की योजनाएं यदि कोई हो तो क्या है? इस सवाल का जवाब दिया आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तोखन साहू ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि 2025 से 2029 की अवधि के लिए राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन की योजना विचाराधीन है। वर्ष 2024-25 के लिए बजट का अनुमान 1150 करोड़ रुपए है। हालांकि वित्त मंत्रालय के निधि प्रवाह दिशा निर्देशों के अनुसरण में संशोधित अनुमान चरण में निधि को 1150 करोड़ रुपए से घटाकर 108 करोड़ रुपए करने का अनुरोध किया गया था। शहरी सेवा प्रदायगी की अवधारणा के प्रमाण के रूप में अर्बन प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन गवर्नेंस पोर्टल का विकास किया जा रहा है और इसका पूर्ण शुभारंभ कार्यान्वयन के बाद मिशन अवधि के दौरान होगा। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों से जुड़े सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। कार्यक्रम के इस हिस्से में सवाल राज्यसभा से जुड़े हुए हैं। ये सवाल जुड़ा है गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने देश में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की कुल संख्या का अनुमान लगाया है? ई श्रम पोर्टल पर कितने गिग श्रमिक पंजीकृत हैं और कितने प्रतिशत श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं? ऐसे गिग श्रमिकों की संख्या कितनी है जो स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवरेज या पेंशन संबंधी पहलों सहित केंद्र अथवा राज्य द्वारा संचालित किन्हीं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं? इस सवाल का जवाब दिया श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि नीति आयोग की जून 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के अनुसार देश में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों की संख्या वर्ष 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जिसके वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। पहली बार गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों की परिभाषा और इससे संबंधित उपबंधों को सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में दिया गया है, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। इस संहिता में गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवरेज, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति सुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित उचित सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का उपबंध है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वे स्वयं और उनसे जुड़े प्लेटफॉर्म कामगारों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराएं। इससे प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभों को प्राप्त करने में सुविधा होगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन भी शुरू किया है, जिसमें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाओं को एकल पोर्टल अर्थात ई श्रम पर एकीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य ई श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करना और उनके द्वारा अब तक प्राप्त किए गए लाभों को ई श्रम पर देखने की सुविधा प्रदान करना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गिग कामगारों के योगदान को मान्यता देते हुए सरकार ने 1/2/2005 को की गई अपने बजट घोषणा में उनका ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने, उनके पहचान पत्रों की व्यवस्था करने और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार और लहर सिंह सिरोया ने। इन सांसदों ने अंतरिक्ष विभाग से पूछा कि क्या विभाग के पास कोई विशेष स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या में साल दर साल वृद्धि हो रही है और कई अन्य स्टार्टअप इस दौड़ में शामिल होने के इच्छुक हैं। सीड फंडिंग और इसकी अन्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है? अब तक कितने स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की गई है?
इस सवाल का जवाब दिया प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि इन स्पेस के पास निम्नलिखित अंतरिक्ष स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम योजनाएं हैं। इन स्पेस की सीड फंड योजना भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को नवीन अवधारणा के साथ प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना इन स्टार्टअप्स को विचार प्रदर्शित करने और अगले स्तर पर ले जाने में सक्षम बनाती है। चयनित स्टार्टअप्स को उपलब्धियों के आधार पर 3 या उससे अधिक किश्तों में अधिकतम 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इन स्पेस विभेदी मूल्य निर्धारण नीति के अंतर्गत अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को अंतरिक्ष विभाग इसरो की विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने, उपयोग करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रमोशन सेवाओं के लिए रियायती मूल्य सहायता प्रदान की जाती है। इन स्पेस का उद्देश्य अंतरिक्ष उत्पादों को विकसित करने के लिए गैर सरकारी संस्थानों को बढ़ावा देकर अंतरिक्ष प्रणाली में वाणिज्यकरण को प्रोत्साहित करना है, जिससे वैश्विक और घरेलू अंतरिक्ष क्षेत्र की मांगों को पूरा करने हेतु उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। इस प्रयास में भाग के रूप में अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यकरण के संचालन हेतु डिजाइन की गई एक वित्त पोषण योजना प्रौद्योगिकी अंगीकरण निधि की स्थापना की गई है। इसके अलावा प्रासंगिक अंतरिक्ष क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ साथ अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को परामर्श सहायता भी प्रदान की जाती है। इन स्पेस सीड फंड योजना उन अंतरिक्ष स्टार्टअप्स और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिनका उद्देश्य अभिनव अंतरिक्ष उत्पाद एवं सेवाएं विकसित करना है। योग्य आवेदकों को शुरुआती चरण में ऐसे स्टार्टअप्स और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग शामिल हैं जिनके पास नए विचार और परियोजनाएं हैं, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में ऊर्ध्व प्रवाह, मध्य प्रवाह और अनुप्रवाह चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। सीड फंड चयनित आवेदकों को उनके विचारों को साकार करने और परियोजनाओं को शुरू करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस सहायता में फंडिंग, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और नेटवर्किंग के अवसरों तक पहुंच शामिल होगी। इन स्पेस सीड फंड योजना के तहत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कृषि, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए इन स्पेस ने 6 भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को अनुदान प्रदान किया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है स्वच्छता ही सेवा अभियान से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने। उन्होंने पर्यटन मंत्रालय से पूछा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह अभियान भारत में पर्यटन प्रचार के साथ स्वच्छता को किस प्रकार एकीकृत करता है। क्या इस पहल के अंतर्गत झारखंड राज्य में कुछ विशिष्ट विरासत स्थलों या पर्यटन स्थलों में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। उन्होंने बताया कि स्वच्छता ही सेवा 2024 का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छता के लिए मिलजुल कर कार्य करने और नागरिक भागीदारी की भावना को फिर से उत्पन्न करना था, जिसमें समग्र समाज के दृष्टिकोण के तहत 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वच्छता लक्ष्य इकाइयां, श्रमदान गतिविधियां, जिनका उद्देश्य लक्षित इकाइयों और सामान्य स्वच्छता के क्षेत्र में समयबद्ध सुधार करना है। स्वच्छता में जन भागीदारी, सार्वजनिक भागीदारी, जागरूकता और समर्थन को बढ़ावा देना। सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, निवारक स्वास्थ्य जांच का आयोजन करना और सफाई कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करना। भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो न केवल सुरम्य परिदृश्यों बल्कि बेदाग स्वच्छता के मानकों पर भी निर्भर करता है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति स्वच्छता के जोखिमों को कम करना महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। इसका समाधान कई चैनलों के माध्यम से किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों निर्देशों के अनुसार हर वर्ष स्वच्छता ही सेवा अभियान चलता है। पर्यटन मंत्रालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थान, राज्य होटल प्रबंधन संस्थान और फूड क्राफ्ट संस्थान जैसे शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से स्वच्छता ही सेवा के तहत देश भर में
स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम चलाता है। इस योजना में विभिन्न पर्यटन स्थलों और तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। स्वच्छता ही सेवा 2024 के दौरान रांची, झारखंड सहित कुल 374 गतिविधियों स्थलों को इसके अंतर्गत लाया गया है। इन पहलों का उद्देश्य पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ाना और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगर बात प्रमुख सुधारों की करें तो इसमें शामिल हैं विभिन्न अभियानों और शैक्षिक कार्यक्रमों, जागरूकता के माध्यम से स्वच्छता के महत्व और सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों की जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन अभियानों से पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में अधिकाधिक रूप से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिला है, जिससे पर्यटन के प्रति अधिक स्थायी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी में भारत की रुचि से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद अनिल कुमार यादव मंदादी ने। उन्होंने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से पूछा कि क्या भारतीय ओलंपिक संघ ने 2024 में आशय पत्र जारी करके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फ्यूचर होस्ट कमीशन को 2036 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की रुचि औपचारिक रूप से व्यक्त की है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? क्या इस संबंध में सरकार को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फ्यूचर होस्ट कमीशन से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? इस सवाल का जवाब दिया युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाना भारतीय ओलंपिक संघ की जिम्मेदारी है। आईओए ने 1/10/2024 को 2036 में भारत में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को एक आशय पत्र जारी किया। आईओसी के पास एक समर्पित आंतरिक निकाय है जिसका नाम फ्यूचर होस्ट कमीशन है, जो इच्छुक देशों द्वारा ओलंपिक की मेजबानी के विषय से संबंधित है। इच्छुक राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों को ओलंपिक खेलों के एक विशिष्ट संस्करण के लिए मेजबानी के अधिकार लेने हेतु एफएचसी के साथ संवाद करना अपेक्षित है। किसी एनओसी द्वारा ओलंपिक खेलों के आयोजन हेतु एक बार अभिरुचि व्यक्त करने पर एफएचसी के साथ संवाद, सतत बातचीत और उसके बाद एफएचसी द्वारा संचालित लक्षित संवाद जैसे विभिन्न चरणों से गुजरता है। इसके अनुसार आईओसी कार्यकारी बोर्ड अपनी आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार मतदान के आधार पर मेजबान एनओसी का चयन करता है। I had the occasion to reflect in a very focused manner that what appears in the Indian Constitution has to emanate first from our founding fathers, and then any change effected whatsoever has to be sanctified by the Parliament, and in some cases by 50% of state legislatures, and then finally it gets constitutional sanction with the Honorable President signing it under Article 1. And therefore I had pleaded with the Leader of the House that the House needs to know that Constitution which according to this directive holds the field today. मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें,
है ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। ओ मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कांड संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Namaskar viewers. Hello and welcome to Sunset TV. I am Tina Jha. You're watching Perspective. India is making remarkable strides in artificial intelligence, leveraging its potential for public good and national development. At the AI Action Summit held in Paris recently, Prime Minister Narendra Modi highlighted India's commitment to technological advancement and innovation, asserting that we are developing AI applications for larger public good. Talking about India's AI vision, the Prime Minister noted that India, considering its diversity, is building its own large language model for AI. He even underlined that India is ready to share its experience and expertise to ensure that the AI future is for good and for all. To talk about the strides India has made in embracing AI for development across different sectors and the framework we are creating to address ethical concerns, security risks, and skilling and reskilling of workforce, I'm delighted to welcome on this broadcast two very distinguished guests, Mr. Abhishek Singh, Additional Secretary, Ministry of Electronics, Information and Technology, and Mr. Madhusudan Bhaskaran, Principal Consultant, IIT Madras Pravartak. Thank you, gentlemen, for joining us on this broadcast on Sunset TV. Before we focus on the assertions made by Prime Minister Modi at the AI Action Summit, Mr. Singh, the first question to you about India's adoption of AI. The first word from you, perhaps, on the key outcome of this AI Action Summit we saw last week, which was co-chaired by Prime Minister Modi along with the President of France. Yeah, as you rightly said, India and France co-chaired the summit. Honorable Prime Minister was there along with President Macron, and India and France were actively involved in conceptualizing this summit for a very long time. In fact, India was part of the steering committee and we were part of the 5 working groups. The 5 working groups included the working group on governance, trust in AI, public interest, future of work, and culture and innovation. And all these working groups worked very hard for the last few months to come to the deliverables of the summit. And the deliverables included the declaration which kind of outlined the way AI will be implemented, how AI governance will take place, and most importantly, the 2 very key important announcements that were made at the summit included the public interest AI, which included setting up a foundation, the current.ai initiative, with the investment of almost 400 million euros, which would take up projects for advancing the cause of AI. India has been a founder country member to join the foundation, and we'll be working with the other stakeholders there for ensuring that how we can take measures and how we can take projects to democratize access to compute, democratize access to data sets and algorithms. So that is a very key outcome of the summit. The other key outcome was coalition for sustainable AI. How do we ensure that we not only develop AI, but we develop that in a sustainable manner without using too much of energy,
use green energy for building the data centers which power the AI solutions, and work towards that. India was a signatory for the Coalition for Sustainable AI also. And in addition, we agreed to work towards building applications and use cases that can help societal problems at the scale, and that can help kind of create an AI use case in almost all country. And it was also decided in the summit that India will be hosting the next summit, which will bring together all the stakeholders from across the world to India, and that will be a great opportunity to showcase our strength and what we have been building and what we have been working on in the field of artificial intelligence. Sure. We'll be talking about these initiatives and efforts that the government is undertaking to strengthen India's AI revolution. But Mr. Bhaskaran, your thoughts on how India is embracing artificial intelligence, because AI is no longer a futuristic concept. It's a reality, an immediate reality that is reshaping our digital landscape. Okay, so now I'll start off with three things. So I am part of IITM Pravartak. I am also part of Bharat Jan Consortium. So myself, Professor V. Kamakoti, the director of IIT Madras, and Professor Umesh are the three people representing IIT Madras in the Bharat Jan Consortium, which was mentioned by the Prime Minister Modi ji, Honorable Prime Minister in France. And of course, Professor Ganesh Ramakrishnan is leading the initiative, the AI initiative through Bharat Jan in India. Professor Ganesh is from IIT Bombay, and this is a consortium of 5 IITs, 1 IIT and 1 IIM. IIT Bombay, IIT Madras, IIT Mandi, IIT Delhi. Sorry, not IIT Delhi. IIT Hyderabad, IIT Hyderabad, and IIM Indore. So, I'm proud to be part of the consortium and see that we are building foundational models for India. That is point number 1. So we are able to take the theoretical concepts to practice from the academic perspective. And the second most important thing, which Pravartak is very actively doing through a MOU with Bharat Jan, is to take this to the end users. So we have started talking to various stakeholders in the government, central government, as well as we are also talking to the Indian Army, where data could be pretty sensitive, where maybe we have to build a system in an air-gapped environment. That means the model, foundational model that you build for the end user can be used only, is air-gapped and not available. And of course, the larger picture of taking all the models to the public. It becomes open source, and we are talking of India-centric LLMs because the primary focus is going to be Indian data. Right. Sure. So we'll discuss all of these aspects in greater detail. But Mr. Singh, coming back to you and taking on from what the Prime Minister asserted at the AI Action Summit about India's adoption of artificial intelligence, he spoke about some of the highlights and some critical areas in which India has not just embraced AI, but also become a dominant force. Talk to us about some of these ambitious steps that the government has undertaken to put India in that leadership position, especially in critical areas which transform people's lives. Like India, of course, as you all know, the Honorable Prime Minister and the government approved the India AI mission last year, which an investment of more than 10,372 crores towards taking up steps which will address the gaps that exist in India's AI story. And these, the whole implementation of the India AI mission is based on taking steps in 7 key pillars. And what are these 7 key pillars? Like, first and foremost, the biggest bottleneck, the biggest obstacle to developing AI applications, foundation models in India has been availability and access to cost to compute, which is reasonable and which is accessible and affordable. So in the India AI mission, what we have done is that we have empaneled cloud service providers to make GPUs available. Almost 18,000 GPUs have been made available at a cost which is much lesser than anywhere else. Like the cost that we've discovered through the bidding process is around 115 rupees per GPU per hour. And on top of that, India will be giving almost a 40% subsidy. 40% cost will be borne by the government and rest will be borne by those who are needing it. So getting GPU access at less than $1 an hour
when the market prices, when others are getting a $2.5 to $3 an hour, is a big step which will ensure GPU available for all our researchers, entrepreneurs, startups, academicians who are working on AI models and AI applications. The other key initiative that we have taken up is building an India datasets platform, because we know that along with compute, what you need is to ensure datasets are available in various domains. So for that, the India AI Mission India datasets platform is being built, which will ensure availability of AI-ready data, which can be used by all entrepreneurs and startups and academicians to train their models or to build their applications on top of it. Then the third key initiative in India AI Mission is, of course, about building a foundation model, for which we published a call for proposals on the 30th of this month, under which we wanted those who can make a foundation model to kind of submit proposals for that. Happy to say that on the last date of 15th, which was 15th yesterday, we got almost 67 proposals from various companies and various academicians and startups for building a foundation model. Already we have heard about initiatives of Bharat Gen that Professor Ganesh Ramakrishnan and consortium of academicians are taking up under the National Mission for Cyber Physical Systems. And there are several other steps in the private sector that we keep on hearing about, Kruthrim and about Sarvam and about Core Over and multiple other initiatives, the Hanuman, which are being built for foundation models. But I'm sure with this initiative of the government, we will be able to at least incubate a few foundation models that will be trained on Indian data sets. And the other key initiative, the fourth key initiative under the India AI Mission, is about application development, which is one of the most critical part of it, because many people do believe that India will be the use case capital for AI applications. And under this, what we did, what India AI Mission did, was it published 14 problem statements across 5 themes. The themes included agriculture, healthcare, climate change, governance, and learning disabilities. And we have got more than 900 applications under these 5 themes, which are currently being evaluated, which is almost complete. And we have identified almost 30 solutions that will be scaled up across these 5 themes. Then there is another pillar under India AI Mission, the 5th pillar, that is of providing support for skilling. We all know that India is very strong when it comes to skills, right. But in order to ensure that we continue to retain that, we are providing fellowships at all levels for undergrad students, for master's students and research students for working on AI projects. We are also building data labs across the country, training youths to become data scientists, data annotators, to ensure that we are able to leverage the jobs that we created in this economy. The 6th pillar is also about the startup initiative, how to provide support to startups at all stages, pre-seed stage, seed stage, and also at the mature stage. And the last but not the least is about the safe and trusted pillar. How do we build in solutions which are